যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাওয়ার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাটা তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে, যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। Hi guys, thank you for joining the live stream. I hope the audio is coming fine. We have our Vanguard bros with us as well. So far Abhay has joined, maybe some more will join. Right after I say my piece and we open it up for discussions. And if there are enough people in the live chat who are members who want to join the conversation, only then I'll put the link for the members only section in the community tab as well. Today will be a broad discussion and a long discussion. I haven't been doing long live streams in a while. I'm very schizophrenic about it. Every now and then I focus on the pros of doing long live streams, and on other days I remember the pros of doing short live streams. So today I'm in a long live stream kind of a mood, simply because of the vastness of the topics I intend to get into. First is, let's get the Dhurandhar topic out of the way, because most people will be interested in Dhurandhar, not Bengal. So we'll discuss Bengal later in the live stream. There are only a few interesting things to discuss from Bengal. I mean, whatever is happening in Bengal is obviously, it's absolutely mad and insane. But since it's happening almost 24/7 and every day since 4th May, that mad, insanely awesome list of things also seem mundane to us. We are kind of getting spoiled at this point as Bengalis who are nationalists. Bengalis who hate their country obviously are having a real tough time. Some of them with power, some of them haven't been in power for a long time. Some of them got beaten up last night by the police. So a lot of that stuff, yes. D3 Bengal cameo. D3 though now will happen probably within the next 2 years, because what D3 mainly does is gather a bunch of influencers and see if they can show what we have been told literally is this, that we are not creating an army of defenders of the government. We are seeing that the good things done by the government is not either getting the correct eyeballs or the correct number of eyeballs, or it's not getting or it's not even getting covered. So how about you youngsters who are influencers, how about if required, do criticize, give constructive criticisms, be civil about it, but if you see something good, please do show that as well. That's the sort of the working relationship between the people who are invited to the D3 events and the organizers. So let's see what happens. This weekend I'll be in Lucknow meeting the UP Chief Minister. Fingers crossed, obviously. Most probably we'll be meeting him if all goes well, unless something drastically changes, etc. On its thoughts on Shubhendu, awesome beyond expectation. Also, Jaipur Dialogue Summit in Kolkata this time almost confirmed. I don't think they can fill seats there. It's pretty pricey, and unless there's J. Deepak or Sanjeev Sanyal, it's tough. Abhay is waiting here, of course, but Abhay और थोड़ा wait कर ले. So the main thing we'll get into first is Dhurandhar 2 releases on OTT platforms. Jio for Indians, Netflix for the world, Netflix later on for us as well.
I noted down some of the things I had remembered that, yeah, it was there somewhere. I don't remember where. And I, I'll proudly admit today, I have had the pirated copy of Dhurandhar 2 since its release, and I watch it almost every day during my workouts. Um, mainly the action scenes, obviously. But since it released on Geo, I sat down to watch it properly yesterday, last night again, and I noted them down. The points I wanted to, the Easter eggs and details that I believe other people have not caught on. Those I have not noted them down. I don't think I missed out on any. Actually, the best would be if you all did a film appreciation ceremony with me on a giant screen and we watched it scene by scene, because there is an infinite numbers of details to discuss from the film. Okay, I like it even more now. It's already my second favorite Indian film of all time, and in theaters it was awesome. But uh, after all, you are in a theater. There's no privacy. You can't rewind. You missed maybe one frame. And in movies like Dhurandhar, with movies by people like Aditya Dhar, you miss one frame and you miss a key part of the story. So now that I've seen it properly in the comfort of my home, and comfort of my home, luckily for me, does not mean watching it on a mobile phone with phone loudspeakers or bad Bluetooth headphones. I luckily do have a great setup because I'm a music producer. Watching Dhurandhar 2 in the comfort of my home from such a setup, with I think an upgraded color gradation that has been done for Dhurandhar Revenge as well. They did mention that they are doing it for the Dhurandhar Part 1 re-release, uncut release on Netflix. I think they have done the same for Dhurandhar Revenge as well. It definitely looks way more beautiful and layered, the color, okay, than the color gradation in the cinema halls. So I'll just go through the points, let's say hints that Aditya Dhar was giving that people might have missed. I might even be wrong that they are hints. They might be just coincidences. Okay, never read into these things too much. There's a running joke in Bengal society about Satyajit Ray that people try to look for layers in his movies to such an extent that it reaches the point of absurdity when maybe this incident sometime really happened or not, but this has survived as a joke in Bengal that um, people are watching a Satyajit Ray movie on a slide, on a curtain, okay, with a projector on, like the people watch movies in villages, in Indian villages, or at least until a few years back when there were zero smartphones. So in that scenario, someone's watching, an entire village is sitting down together to watch a Satyajit Ray movie, and on the curtain, a lizard walks by, and people do not realize that that lizard was just a lizard, and people start discussing what did Satyajit Ray really mean by putting that lizard. Okay, what were his uh, layered filmmaking genius ideas behind that lizard walking? Was it was it an extrapolation of some social behavior? Are we supposed to think of ourselves as lizard? No, none of that kind of thing. But no, the points I'm going to mention, I think they were deliberately put in by Aditya Dhar. After we discuss Dhurandhar, the 6-7 additional points you all might have missed, we will get into a very important discussion where we will take in our Vanguard bros as well, which is Dhurandhar has a particular kind of language, a vibe, a kind of appeal. First of all, its language of violence is insane. It has normalized violence for a particular strata of Indian kids who either quenched their thirst for looking at gratuitous violence from only and only Western movies, or there was another section who has always hated violence or disliked violence, or has even never seen violence, but they have ended up watching Dhurandhar 2 and have ended up liking it, and being somewhat okay with violence, at least to the degree that Indian society is okay with violence. I think it's good that the degree actually increases, because for your personal life, your personal family safety, etc., you do need to have a propensity for violence. And if Dhurandhar 2 especially, I mean, after watching Dhurandhar 2, Dhurandhar 1 does not even seem like a movie. Dhurandhar 2 is about 100 times better a movie than Dhurandhar 1, but Dhurandhar 2 would not exist without a rocket launch pad like Dhurandhar 1. But
I don't even remember Dhurandhar 1. I don't even like the songs of Dhurandhar 1 for some reason. Actually, objectively speaking, the songs of Dhurandhar 1 are probably better than Dhurandhar 2's songs. But after looking at Dhurandhar 2 once in the cinema hall, everything changed. My thoughts on the music completely changed because of the application of those songs. So, if Dhurandhar 2 is going on showing people casually discussing violence, okay, here's a family puja going on, here's a kid on my floor, and hey, by the way, you spoke with Israelis, so be very scared, let my boy go. That kind of thing is very good, and it's great that people are knowing about coming to know about such lifestyles, such people, that you might be in a situation where you have to operate like that. That stuff is really good. I'll have a sip of coffee now. So, the second topic of our discussion is where does Dhurandhar 2 sit in the context of urban nationalism? Because nationalism in India, since I grew up, has usually been about cricket and not much else. India, Pakistan, yeah, Pakistan is a bad country. We are a better country, but war is also bad. That kind of a nationalism was all we had. What exactly is nationalism? Are you nationalist? Am I nationalist? People, I don't think really gave these things much thought, even in the 90s. But today, nationalism has become mainstream, and people who were not nationalists, in fact, have been forced into becoming nationalists, or at least giving the vibe that they're nationalists. A lot of people have had a change of heart and have become nationalists, etc. But uh, there is obviously a very, very huge uh, dehati aspect to India's nationalism at the moment, right? Um, with uh, repeated types of thinking, motifs of thinking, like real India lives in the villages, etc. Village life is better. Any chance an Indian nationalist or right winger gets to verbally appease a non-city dweller, he takes it, as if there is some secret brilliance, some unknown underrated genius going on in the villages of India. That urban folk are completely unaware of. We are completely oblivious to it. There is some hidden beauty. We know what that is, of course. There's one significant beauty that will be in any village in the world, versus the urban centers of that country, is simply neighborhood, familial bonding, etc. And that is absolutely beautiful. Anybody who lives in the city will have a nice time living in that village for 5 days. But I look at only and only votes that happen with legs, and people are not flocking to villages to live. People are not flocking to Bangladesh for work. Therefore, I won't take Bangladesh's GDP per capita being higher than India seriously. I won't take Cuba's healthcare seriously, because people from Cuba are running away on rafts, taking life risks and going to USA. Therefore, I won't take their healthcare seriously. And I won't take village life seriously if everybody from the villages seem to be either going to the USA, going to the city for a job, or going to the city to live in slums and then work in the city. Okay, the people who are still living in the villages, they have their ways to live. They are too lazy to go out, they are too scared to go out, they don't have an avenue to go out, or they have enough wealth there, or they are simply stuck there. Not too many villagers in India are saying, yeah, fuck city life, I'm having a chill life in my village here. Not too many people will say that. The only people who say that are people who have spent their lifetimes in a city, and they just want a change of scenery. Then what does nationalism, or what should nationalism look like in the future? We obviously call that Hindutva 2.0 from this channel, or let's call it urban nationalism as well, or let's just call it how nationalism is seen by urban folk. Okay, because in the end, since urban areas have the power of narratives, ultimately everything will happen kind of in a pro-urban way. But that facade of loving village life or being pro-village life, that mockery will also go on, and with that mockery comes a bunch of side effects, policy side effects, which either prevent the progress of the country, or keep injecting some amount of dehatism in all of our policy and politics.
Dhurandhar is a stark fucking breakaway from that kind of thinking. Not very politically. I'll tell you why. It's for a different kind of reason, because it pulls together and makes a fan group out of people who would never identify in the same kinds of nationalism. Maybe in words, maybe rhetorically they would, maybe on Facebook and Twitter they would. In real life, these kinds of people would never be part of the same nationalist group. Dhurandhar is bringing those people together. That's what we'll discuss. Where does urban nationalism lie? Because Dhurandhar is doing one thing among countless other awesome things. They have broken ground on one very, very important thing. Nationalistic movies have to give off visually or orally Hindu vibes. This premise has been absolutely messed with Dhurandhar. This premise has been ended by Dhurandhar. Excuse me. Although Dhurandhar, Aditya Dhar does keep Indic ethos in it as much as possible, in the most key places, in the most intelligent of pockets. Okay, he does not make a show out of that. Let's see how Bharatiya this movie is, bro. I'm an Indian nationalist and I'm making a movie that will glorify India. Let's look for a chance to put some classical music there. Let's do a version of a classical music here. Let's fill up the background score with flutes and sitars. Or let's have, therefore, now compulsory Sanskrit songs. Dhurandhar, Aditya Dhar has a weird and insane degree of not being stuck up with unimportant horse shit that nobody gives a fuck about, other than people on the internet, or specifically people with significant social media handles on YouTube or Twitter, Facebook, etc., and they are sort of the intellectuals of the political side. So it's almost right that they do things that are not relevant to everybody. People should not be discussing things that are just relevant to everybody. That quote unquote everybody means the plebs, obviously, masses, etc. So it's fair that a lot of people discuss these things which are not relevant to everyone. But remember that urban Dehati nationalists will always make a mockery of some interest or some priority of yours as a city dweller, justifying it on the basis of that issue not being relevant in the villages. Okay, they will say, go to that village and talk about X, see who cares. Now, how about Aditya Dhar does not give a shit about giving off Sanskrit vibes and fake Bhagwa vibes in the movie anywhere. How about Aditya Dhar fills the movie with English music? The colonizers' language, guys. What will happen to us? What will happen to our filmmaking? My God. And that is urban nationalism, according to me, where you use the best of every world, of every country, literally, every genre of every country, every language, whatever is applicable here to make an insanely good movie, I will use that. Because my goal here is to make an impactful movie. Everything else can fuck off. So we'll discuss urban nationalism from this angle. And then we'll come to Trinamool shenanigans. Now, here are the 5-6 points that you might have missed out on, Dhurandhar, okay? Let me check some comments, by the way. And I will have to keep ABP on the open because insane things are going on, by the way. Those of you all who don't know, Trinamool has 28 MPs right now. And word on the street is that they allegedly have 20 already, because they do need minimum 20 to break away and make a TMC or TMC Rito Brotois faction. And in the first half of the day, all those people who are giving hints of breaking away from Mamata Banerjee met with Shubhendu at Bhupendra Yadav's house. In the evening, they are meeting at Trinamool MP Shatabdi Roy's house. Again, Shubhendu is there to mediate it. So let's call this controlled demolition. The chief minister mediating a ruckus between the opposition. Are you getting tired of winning? Maku is comparing Ray with Dhar. Please elaborate. Even I'm comparing Ray with Dhar. Obviously, Dhar is the Ray of this era.
Satyajit Ray caused a leapfrog in our filmmaking capabilities. Aditya Dhar is doing exactly the same. And Anurag Kashyap himself, Anurag Kashyap, Maniratnam, not Maniratnam, who's the comedy guy? Priyadarshan. These people are now, and Ram Gopal Verma to chhodi do. These people are, Ram Gopal Verma is kind of opposed to far left commie politics as well. But the people who are very much in favor of leftist politics, even they are saying that Aditya Dhar is a phenomenal director and it's just his politics. I am saying Aditya Dhar is the Satyajit Ray of this era, and Satyajit Ray would have been very happy to, if he was alive, he would be very happily meeting Aditya Dhar, blessing him, and also disagreeing with his politics. Satyajit Ray would have said the same things about Aditya Dhar that Ram Gopal Verma, Anurag Kashyap are saying. Do you like it more than Gangs of Wasseypur? No, Gangs of Wasseypur is still my favorite. So Dhurandhar 2 is my second favorite film. Yeah, firstly, guys, this I had noticed in Uri onwards. I saw it in Uri, I saw it in Dhurandhar 1, I saw it in Dhurandhar 2. Aditya Dhar does seem like a big time gamer who plays a lot of strategy games. Okay, in Uri, even in Article 370, you could see some shots that are straight up Counter-Strike, Quake 3, Project IGI shots. I was reminded of Project IGI yesterday again while watching Dhurandhar 2 because of the scene of when he first gets into that MLA's house. Okay, so when he's getting into that MLA's house, he does very video gamey things. The camera angles are very video game like, and it's not just first person. Okay, when the camera angle is not first person shooter, then the camera angles that happen in a video game, at least to tell the story, the montages, that kind of stuff happens in Dhurandhar 2 repeatedly, but mainly in that MLA's home invasion scene as well. And there, the thing that reminded me of games the most was, I'm not a gamer at all. The last game I played was FIFA 2002. I'm from that era. FIFA 2002, Max Payne 2, FIFA 98, Road Rash, etc. Okay, but so he has to climb up the wall, but there are conveniently 3 boxes perfectly in the L shape. Okay, you get on one, then you get on this, then you get on the wall. So I got clear Prince of Persia, Project IGI vibes from that scene, and they were deliberate. The way Ranveer was moving around and his situational awareness training, his military body language, that stuff is so spot on repeatedly throughout the film. And another thing I really liked in that entire sequence is right after he has done that massacre and is coming out, and everybody, all the family members of that MLA are crying about. He is at that point, he's sort of a soldier who has completed his mission and does not give a fuck about anything else that's going on the right and left. That's the walk he takes. Ranveer says so many things with his expressions and body language, obviously directed by Aditya Dhar to do it that way. Is brilliant. And Dhurandhar 2 is the best example of show don't tell we have ever had. And a lot of people, a lot of, again, patriots, nationalists who don't understand why a certain section of the Indian populace do not watch or cannot watch Indian films at all and only watch Western films or any global good movie, but not Indian stuff at all. They think that these people are just too privileged and urban colonized minds. Therefore, थोड़ा चूतिया फिल्म देख अपने देश का, नहीं तो तू क्या पेट्रियट बनेगा? कॉलोनाइजर का फिल्म देखेगा बैठ के भोसड़ी के. Oh, thank God Aditya Dhar didn't think that way. But anyway, and the people on the urban side who also cannot really explain why are they not liking Indian movies at all. There are a bunch of reasons not to, but I think the key reason that I cannot sit through 15 minutes of Bollywood filmmaking is the thing that's absolutely lacking in Dhurandhar 2. It was there maybe 1%, 2% in Dhurandhar 1. Is show don't tell. There is nothing left up to the imagination of the audience. There is nothing left for interpretation. There is nothing left for the actor to show by his expressions. There is nothing left to show
even by the unfolding of incidents, everything is discussed explicitly by characters in Indian movies, because either the Indian audience is that dumb and they cannot pick that up, or they think in the Indian audience is dumb and therefore they won't look at the difference between Ghajini and Memento. Look at that. Look at, you will call, obviously, I mean, everyone in the West is racist against Indians. Look at what Indian directors think of you. They know you can't swallow a Memento. Therefore, we'll have to retard it down to a linear fucking random angry man story and can turn it into Ghajini. We can't do Memento here, bro. Where two parallel stories start and the end of the film is actually the half, the center half of the entire story. So no, the audience is stupid, so we'll keep on making stupid movies. There was a great dialogue in Dotto versus Dotto where Srijit Mukherjee, playing a character kind of based on Moiner Ghodaguli founder Gautam Chattopadhyay, is discussing filmmaking with another guy who is a struggling filmmaker in his home, and he says, like, Padar Pachu, okay, random Pachu in the neighborhood, he can't understand Godard, so why will I make a movie like Godard's? What's going on? Oh, okay. And Srijit's character says, Pachu Godard বোঝে না বলে তুমি Godard বানাবে না. So just because he doesn't understand Godard's movies, you won't strive to make Godard's movies. What the fuck? And we see Aditya Third is not that kind of a person. So this is just one example that Ranveer's acting can be discussed in this context, but there are thousands of such scenes through the entire film. And this scene also is so juicy that he won't look on the right and left. The main point of that scene is that he is simply a soldier who has accomplished his mission. It does not matter who got killed. And by the way, guys, if West Bengal was under Trinamool rule for another 10 years, this is the stuff we would have had. We already discussed how long would it take for Bengal to become Liari. Bengal's villages are like this anyway, but I mean, entire Bengal will be like this. Another 10 years later, the people who attacked me would probably pick up someone from my home, and if a person is in that category who will not take things lying down ultimately, completely, and not say that, okay, I don't want to get into these things, therefore I'll give the Durga Puja chanda and stuff. The person who is not that kind will take up the guns and go shoot up the place. We were absolutely looking at that future, and we are not. So anyway, this is the first point. Dhar surname exists in Bengalis too. Any connections between Bengali Dhars and Kashmiri Dhars? I don't know. I believe it would be very, it would make sense if it was in fact the case. Secondly, the scene where Ranveer finds his sister, okay, in Tilupam. In that scene, right when he is opening the door, the cello line that goes on in the background music is the bass line of the intro of Jaiye Sajna. That was very interesting. This is the intro of Jaiye Sajna, and in that scene, it's a much longer, drawn out melody, played slowly, but because it's played on a cello. But that's the exact melody that plays there. I like that stuff. I like when one piece is broken up into many versions and sprinkled out throughout the film. And that's one of the other reasons I cannot stand Bollywood movies, is because Bollywood does not know the concept of a background score. For Bollywood, every scene is an individual scene, okay? It does not have an uniform tone in background scores. It does not have an uniform palette that, okay, these are the fixed few instruments or tones or textures, audio textures, palettes of sounds we will use for the entire movie, whether it's in the sound design or in the background score.
This happens for almost every good movie, Western movie, international movie that you see. It almost never happens in Bollywood and Tollywood. For Bollywood, every romantic scene means a song or a bunch of acoustic guitar, G major, D major, A major playing. A bed scene means a saxophone. An action scene means any loop from softwares called Damage, Damage 2, Action Strikes, etc. Same fucking loops everywhere. And you'll know of those loops best if you have played a lot of PUBG, okay? PUBG's background score is almost just random loops copy pasted from Damage 1, okay? Uh, Dhurandhar 2, Dhurandhar 1 has a palette. Indian films do not have a palette. And for that reason, Indian films, A.R. Rahman does it, of course, but even A.R. Rahman is not given a strict palette. When you do not have a specific palette for a movie, it all goes haywire. Your brain is too distracted. Even if you like the movie in the end, for the overall vibe, you hang out with your family or your loved one, your lover, girlfriend, boyfriend in the hall. That's why you end up liking the movie. But that movie is not up to the mark in your own mind, in your own head, intuitively, because you'll never even bring that movie in the same conversation with something you see in the West. You will with Dhurandhar. The third thing that I noticed is when Hamza is taking the walk to go sit on Rahman's throne. Okay, this we discussed on the day we discussed Dhurandhar 2's review as well with Mohini, that nothing in the movie is pointless. Even the dramatic aura farming scenes in that scene, in that situation, inside the story, not outside the story, that character is doing that particular thing for a very specific reason. And that is absolutely phenomenal. That is beautiful. For example, we discussed this on the review day as well, that Ranveer throws off Khanani from the terrace, and therefore we get a cool shot of Ranveer standing with red background. Okay, now that shot, first of all, is inspired from Batman, the Batman animated series on Cartoon Network. Batman used to, and the second half of the movie is full of Batman inspired things. Either Batman as a concept, Batman animated series, Batman films, Snyder's Batman, Christopher Nolan's Batman, Batman's background score, the background score in Nolan's Batmans, which are done by Hans Zimmer mainly, the background scores in Zack Snyder's Batman, which are done by Junkie XL. All of that is collectively sprinkled throughout the second half. But that red background does not appear for no fucking reason. That red background appears before Ranveer because there was a signboard that said Gossip Gola, which mysteriously turned into Piss Cola because of a malfunction, and that red light is coming out of that. And so yeah, I threw a guy off a terrace where there was a red light, and therefore you see red light behind me. It's not aura farming. I'm just standing in front of a red light. That is such good filmmaking. But anyway, in this example, when he is going through that warehouse, forgery basically, to go sit on that throne, there are sparks falling on him from this side and that side, and none of those sparks are for show, like in the case of, let's say, Res Sasoki, Res Akhoki, Res Datoki, that song title track, where out of the blue there is a heavy metal song, wannabe metal song, there's distortion guitars, so and there are sparks flying around. And then after a race, I think every Bollywood, it started with probably Mission Istanbul as well. The item song had sparks, flares, all of that stuff. Here, that's not the case. Here, those sparks are flying all around Ranveer because there's probably some forgery, some metal forgery, some building of some metal guns going on the floor above him. And it's a dilapidated building, so there are probably holes through the floor. It's probably a wooden floor, and from those holes, the flares are falling all around him. So that's great detail as well. Arpit is saying, so at the risk of, I feel Dada don't realize how unique this channel is and its subscribers are. I would have loved to discuss it. We do have that for now in the CSK Vanguard group. If you want to contribute in the Vanguard way, then we can have you there. Okay, there are more Easter eggs. Okay, when he finally sits on the throne and lights up the cigarette, and this also we discussed, that cigarette was also not for show.
you do that stuff and you end up having a cigarette for fun. But the main point is the brass section that goes on, okay, trombones, saxophone, all the brass instruments that are there in the orchestra, in an orchestra, the melody that it plays right when he is finally done sitting on the throne, okay, and the text King of Leari appears, that music is very obviously heavily inspired from the main Rocky theme, okay, Rocky da 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 da. That is the melody that plays there because of a similarity in that elation and what's the word, triumphalism, okay, that feeling of triumph. That's what Rocky also needed to feel with that music, and that's what Ranveer also feels here. So that music is sort of given a tribute here, or is referenced here. Here, the fifth thing I'll point out is something I had spoken of from my live streams, and I could not point out exactly where. Was an insane thing. I don't know if it's this has to be deliberate. You won't believe this, guys, what Aditya Dhar did here. When Sanjay Dutt first suspects Hamza, he's having that conversation with Omar outside, and Omar says, I also suspected him. Sanjay Dutt says, you should have investigated him if you suspected him. Then the conversation between Omar and Sanjay Dutt is over. They both go their ways, and Yalina goes inside the room to check if her husband is really an Indian spy or not. The beat, the music that comes in at that very point is an instrumental piece that is majorly focused on the beat of the song, the groove of the song, which is 80% similar to Jhume Jo Pathan. And Jhume Jo Pathan already uses an uncommon groove. Tick tuck tick tuck tick tuck tick tuck. This is the beat. This is the beat that you will you will notice, observe when Yelena is looking for that stuff. Okay? Because right before that moment, what has happened? A Pathan has found some success. The Pathan leaves, and Jhume Jo Pathan's music almost gets referenced there from a different director, a very controversial one, and a movie that is controversial, and that's almost being made fun of here. So do check that out, okay? That's absolutely Jhume Jo Pathan's groove playing in that scene, okay? Right after the Pathan has said something. The song Tichi Topi Wale used in Daud's party scene is from a movie by director Rajiv Rai, who was attacked by Daud Ibrahim. His bodyguard was killed. Shit. Okay. Next point is, yeah, this was insane. I did not think of it. When two things are happening parallelly at this point in this situation, which is Uzair is getting arrested. The plan for Uzair getting arrested is final. People are gathering up in front of the airport in Dubai, and those medical students are getting picked up, those Balochi students, by SP Aslam. Okay. The music for both of these situations are what people call heist music. Okay. You will have heard that kind of music only in big heist movies, during the heist scenes, or in James Bond stuff, where it's also applied because it's heist music. Okay. Some sneaky crime is going on. And here, what's being stolen? What's the heist about? Uzair is getting stolen off. His freedom is getting stolen, and he's getting sent to a prison in Dubai without his knowledge. A similar thing is happening to those Balochi kids. Their freedom is also getting stolen away. They have also no idea what's going on, and they are getting taken away by SP Aslam. And therefore, a heist music plays. And why a heist music? Why aren't we taking... Why isn't there emotional music here? For Uzair, because we don't give a fuck, we are Indians. For the Balochi kids also, because we are Indians, we don't give a fuck. We are the third-party non-stakeholders here who are watching two people, for two different reasons, lose their freedom with varying degrees of justifiability. Therefore, we as the audience, the third-party non-stakeholders, we get a heist music, because all we are seeing is some random guy's things getting stolen. The thing here being freedom. But since we are not emotionally the stakeholders here, we do not get either happy music for Uzair getting picked up, nor sad music for the Balochis getting arrested. That is insane stuff.
By the way, one thing I don't think I've noted this down, but I had to ask you guys, what was this about? Because I distinctly remember in the theaters that when Ajay Sanyal says that "Tujhe kya laga tha? Israel हमको नहीं बताएगा." During that scene, the camera was on Ajay Sanyal, right? In the OTT version, it's on a mobile phone loudspeaker, because that dialogue has way more impact if it's Madhavan saying it or looking at the camera, or the camera is on him. So I'm wondering, why would they change this? Is there, this is probably too much of a tinfoil hat thing and reading way too much into something. But did the MEA tell Aditya Dhar, or did Aditya Dhar on his own not want to appreciate Israel all that much now when it's releasing on OTT versus when he was making the movie, because of many other shenanigans of Israel, whether it's uh, Iran, Palestine, or the alleged presence of Mossad in the Northeast? Why the sudden chance to appreciate Israel thrown away? Okay. The last thing is, oh yes, yeah, Aditya Dhar going full Nolan and Zack Snyder. In the Muridke mosque, when Ranveer out of the blue starts laughing and says, "अगर तुम्हारे पटाखे खत्म हो गए हो तो मैं अपना धमाका शुरू करूं." His laughter, anyone who has seen Batman Begins for more than twice knows that that scene is a either a tribute, or the reference for Ranveer for that scene was Joker's laughter when Batman was beating him up. You all know that, right? That's exactly how the Joker was sitting on the floor with his back on the wall, and he was laughing exactly that way. That, haha, you have nothing on me. You can't do anything to me. That was how the Joker was making Batman feel helpless. What? I beat him up so much and he does not give a shit. Ranveer did that same thing to Arjun Rampal. And for the scene, even right before his laughter, what happened was exactly what happened to uh, I forgot the name of the villain in Man of Steel, but that's kind of what Superman also did. Okay, Arjun Rampal starts shooting up the place. The bullets end right at Ranveer, and Superman with his strong laser vision was destroying the entire wall and then stopped at the villain. So that was a classic Zack Snyder reference as well. See, I like, uh, among other reasons, I like Aditya Dhar also because he takes the influences and from people like Zack Snyder and applies them so beautifully in a perfect way to ultimately tell a story. The problem with Prashant Neel is that he is operating like the DOP of Zack Snyder got a filmmaking budget. That's what Salar is. KGF still had some story, but Salar is just a Zack Snyder short film dragged out to with slow motion. Wait one moment. Yeah. So Prashant Neel is only 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 takes those things from Zack Snyder, but does not tell a story. Aditya Dhar has absolutely imbibed Zack Snyder, David Fincher, Christopher Nolan, Michael Bay, and I think he has a pretty good grasp on what kind of music works where.
what we are going to get to discussing anyway, urban nationalism. English songs, okay. Um, English is known by a whole lot of people all across the country. He wanted to avoid north-south divides as well. He took the chance to involve the Northeast into the conversation as well. Because if you want to involve the Northeast, it has to be through English. They have nothing else. So we will have to use the colonizers' language to make good, really good fucking music. And the genres, all the compositions are Indian, all the arrangements are all Western. It's all, one is hip hop, one is rock, one is metal. My God. Someday we'll have to discuss just the soundtrack of Sapta Sagarache. Oh my God, I learnt it. I can't remember the name. Shit. Sapta Sagaradache Yellow. That movie. I don't know if it's directed by Rakshit Shetty, but the hero is Rakshit Shetty and the heroine is the Kantara Chapter 1 heroine. The soundtrack of that also, oh my God. I listening to that soundtrack, both side A and side B. I realized, can anybody correct me on the name? Sapta Sagaradache Yellow. I think that's it. Listening to that album, I realized that Aditya Dhar, Shashwat Sachdev both, I think, had some courage regarding going completely westernized with the arrangements and the genres because of the kind of success these genres get in the South. And they know that it's not just South Indians who listen to South Indian film music. The entire country is all day long always saying that, oh, South Indian film music is so much better. So why not do that stuff? Why not be bold about it? And Aditya Dhar was able to be bold about it. Sapta Sagar Dache. I don't know. I don't think it's Sagar Dache. It's Sagar Dache. Sagara Dache. Yeah. Sapta Sagara Dache Yellow. Excuse me. I tell you guys, if you are an Indian who likes Indian music, okay, Indian fusion music, Bollywood, Tollywood, pure classical, Indian folk, whatever Indian music you like. But if you like Western music, even 5%, 10%, you have to listen to two albums called Side A and Side B of this film, okay? They did it like a cassette. It's one movie, but it has two separate albums. It's called Sapta Sagaradache Yellow, Side A and Side B, okay? Check out those two albums, okay? And after all, good, bad, these terms are subjective in films, but I will tell you at least this will be the most unbelievable album you have listened to in Indian film music, mainstream film music history, okay? You won't believe that such an album exists in Indian mainstream cinema. You won't believe that these sound decisions were taken for such songs, for such movies, where the story is not about a Westerner, not with a Western vibe. The guy looks like the guy and the girl, random kids you would meet on any street corner in Karnataka. Their story is told in a new way, in a modern way, in an urban way. And for that, you need all sorts of creative influences from all around the world. And people have to be bold about it. People have to, first of all, know about it. Most people do not have the brains for that. But for God's sake, Sapta Sagaradache Yellow, inside A, the title track, is a beautiful retro synthwave, synth pop retro wave sort of a song, okay? That's the name of the genre in which the side A version of that song is arranged, okay? 80s synth pop, okay, synthwave. Inside B, there is also a title track, also called Sapta Sagaradache Yellow. That one is a goddamn heavy metal ballad. Can you believe this? Other than that, about 6 or 7 other insanely cool genres have been covered, both in side A, side B. But Charan Raj MR, I'm finally into him. I don't know who comes up with these arrangements, but anyway, do check those albums out, and we will discuss urban nationalism as well now, and Trinamool a lot later. Now we'll have Abhay, and if any other Vanguard member is available, do start coming online now, okay? The link is given. Hi Abhay, tell us what you think of Dhurandhar 2 after having watched it again on OTT.
and then tell us something about urban nationalism. And do you even agree with my, because today we did not discuss these things at all beforehand on Vanguard. So do you agree that there is an urban nationalist aspect to the vibe of Dhurandhar? Please start and I'll set up my headphone by then. Go ahead, Abhay. हाँ, नमस्कार दादा। हौसला ईंधन बदला। मैंने दूसरी बार फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि मेरा सब्सक्रिप्शन पता नहीं कहाँ अटक गया। मैंने बस आप लोगों को बताया था कि ओटीटी पर आ गई है, पर मुझे जितना याद है मैं उसमें से बोल सकता हूँ, क्योंकि फिल्म मुझे याद है अच्छे से। वो फिल्म का प्रभाव इतना अधिक है ना कि वो आपके मन में बस जाती है फिल्म। एक जगह मैं पहले ही बता दूं कि मैं आपसे एक जगह सहमत नहीं हूं, जो आपने बोला ना कि संस्कृत का प्रयोग नहीं किया तो वो एक अच्छी अर्बन बात है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अर्बनिज्म हैज टू बी वेस्टर्निज्म नेसेसरली। आप वेस्ट से इन्फ्लुएंस ले सकते हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर यह आवश्यक नहीं है कि आपको पश्चिम से ही कुछ लेना पड़ेगा यदि आपको आधुनिक या शहरी या नागरी बनना है। हाँ, लेना और पड़ेगा ऐसा भी नहीं है, और अगर ले भी ले तो उससे डरना भी नहीं चाहिए, झिझकना भी नहीं चाहिए, हाँ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए उससे। हाँ, मैं बस इस बात से असहमत हूँ कि अरे संस्कृत नहीं लिया वो बहुत अच्छा किया, अगर आपका वो अर्थ था तो मैं असहमत हूँ। यदि आपका नहीं था अर्थ तो ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि एस एस राजामौली के दोनों फिल्में जो पिछले बार हमने देखा, बाहुबली और RRR, दोनों में संस्कृत था। दोनों फिल्म अच्छी लगी, पश्चिम में भी उसको बहुत सराहा गया। तो ऐसा नहीं है संस्कृत का स्थान नहीं है। धुरंधर में भी जो फिल्म का आरंभ होता है वो आपके भगवत गीता के श्लोक से होता है। तो ऐसा नहीं है संस्कृत का स्थान नहीं है, आप उसको कर सकते हैं मेन स्ट्रीम। और वैसे भी आपने अंग्रेजी संगीत की बात की, और मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, आप करना भी चाहिए। इट इज द म्यूजिक इज कूल, नो डाउट अबाउट इट। पर उसमें पंजाबी संगीत का जो प्रयोग किया, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ कि पंजाबी संगीत जो है वो बन चुका था गन कल्चर के बारे में, लौंडी पठानी है उसके बारे में, ये सब बन चुका था। पर इस फिल्म ने कहीं ना कहीं पंजाबी संगीत की आत्मा को दोबारा से जीवित किया। जैसे जाइए सजना वाला। जाइए सजना है, फिर अधिकांश जो गायक थे वो भी पंजाबी थे। तो जैसे वो जो अंत में जो गीत बजता है जब वो अपने घर में जाता है, जो अरिजीत सिंह ने गाया है, दिल से नैना लागे, अभय, क्या तो मैं भूल गया हूँ उसको। हम्म। sorry, Abhay. Firstly, okay, smoking is injurious to health, guys. Do not smoke. Smoking causes cancer. Secondly, Abhay, do you think this was Arijit's best work till date? I personally believe it was. अ, देखिए, मैंने जितना देखा है, क्योंकि कोई और को किसी और काम अच्छा लग सकता है, पर अरिजीत सिंह ने बहुत अच्छा निभाया था वो गीत को जो अंत में गाया है। ठीक है, उसका जो आरंभ होता है वो रुद्र वीणा या वीणा से होता है, यदि आप सुने, वो क्लासिकल अरेंजमेंट का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। और ये मैंने बॉलीवुड में सुना नहीं, ये मैंने बॉलीवुड में इस प्रकार का क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने नहीं सुना है जो मैंने धुरंधर में सुना। धुरंधर मॉडर्न भी है और साथ में बहुत ही इंडियन भी है, इसीलिए ये अर्बन नेशनलिज्म का अद्भुत उदाहरण है धुरंधर, कि उसने आधुनिकता को भी अपनाया है, वेस्टर्न ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को भी अपनाया है, साथ में अपनी जो मूल भारतीयता की जो आत्मा है उसको भी रखा है। ठीक है, वो सबसे अच्छी बात है धुरंधर की, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो हमें जोड़ता है। और जो आपने इतने सारे संगीत के बिंदु दिए हैं, अब मैं तो संगीत का उतना बड़ा जानकार नहीं हूँ जितना आप हैं, कि पठान का कुछ संगीत लिया है वो है या मैंने आपकी जितनी फिल्में भी नहीं देखी है कि बैटमैन से इन्फ्लुएंस लिया है, ये सब लिया है। पर इसमें कोई संशय नहीं है कि ये फिल्म का जो बनाने का ढंग था वो बहुत इंटरनेशनल था, इसमें कोई संशय की बात नहीं। इसमें वो ओल्ड इंडियन ट्रोप्स नहीं थे, ऑडियंस को गधे समझने वाली मानसिकता नहीं थी, ऑडियंस के लिए खुला छोड़ दिया कि आप देखो, आप समझो कि वो क्या फील कर रहा है, क्या कर रहा है, आप पता लगाओ। फिर
और एक जो अर्बन नेशनलिज्म की बात है ना, वो ये है कि ये फिल्म ने सबके साथ क्लिक किया, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबके साथ क्लिक किया ये फिल्म ने, जबकि संगीत अच्छा, पंजाबी अभय, नहीं। I actually don't know this. What was the collection like in Dhurandhar? What was the response for Dhurandhar in South? I don't know. धुरंधर 2 1 का तो साउथ के भाषाओं में लाए ही नहीं थे और Hmm. उतना पता भी नहीं था। 2 में जो तेलुगु स्टेट्स है वहां पर 100 करोड़ से ज्यादा कमाया। ये बॉलीवुड फिल्म के साथ नहीं होता है। और आपके कर्नाटका में बैंगलोर में 100 करोड़ से ज्यादा कमाया। वन फिर से रिलीज करी ना, री रिलीज करी थी ना, दे री रिलीज इट अगेन। नहीं, वन वन ओटीटी पे वो ना, किया है। वो वो जियो शायद वो वो जियो वन 2 रिलीज हॉटस्टार होने पे के 2 दिन वॉल्यूम पहले रिलीज। कुछ 2-3 दिन के लिए, हाँ, या 2-3 दिन के लिए 1 रिलीज किया था. हाँ वो या किया था। तो वो जो है क्या बोलते हैं, अ, तो साउथ में भी बहुत चली। और मैंने एक जन से पूछा, वो मलयाली है, तो मैंने बोला उन्होंने, मेरी पहले ही बात हुई थी कि धुरंधर देखना है, जाना है। फिर उन्होंने मुझे बोला मैंने धुरंधर देखी ओटीटी पे, क्योंकि उन्होंने वास्तव में फिल्म नहीं देखी थी, वो मलयाली है। तो मैंने बोला आपने कौन सी भाषा में देखी, आपने मलयालम में देखी क्या? बोला नहीं, हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज। तो वहां पर आपको धुरंधर के कलेक्शंस में ये दिखेगा कि अरे तेलुगु में या तमिल में या मलयालम में उतना नहीं कमाया, क्योंकि वहां के लोगों ने हिंदी में फिल्म देखी कि ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी। तो ये भी है, क्योंकि हिंदी के साथ ये होता है कि लोग समझ जाते हैं। वैसे साउथ के लोग भी बहुत है जो हिंदी समझ जाते हैं। तो वो दिखा एक, जब मैं इंटरव्यूज देख रहा था बहुत सारे तमिल और इसके, जितना मुझे समझ में आया, ऐसी फिल्में ना देश को जोड़ने का काम करती है। लोग भाषा भूल करके वो जो भावना है उससे जुड़ते हैं कि ये हमारा राष्ट्र की भावना है, हमको पाकिस्तान को पेलना है। जैसे सीधा उदाहरण दूं मैं, कि पाकिस्तान को पेलना है भाई, ये लोग गधे लोग हैं, इनको पेलो सालों को। फिर मुझे एक और बात अच्छी लगी कि जो साउथ के भाषाओं में जो धुरंधर का ट्रेलर आया था, उसमें भी जो गाने हैं पंजाबी में ही रखे, ट्रांसलेट नहीं किया उन्होंने, वो ओरिजिनल पंजाबी गाने रखे। क्योंकि और वो बहुत जन को लग सकता है। खान साहब नाम का जो सिंगर है पंजाब का तो काफी पॉपुलर सिंगर है, बट हिज वॉइस इज हाँ एग्जैक्टली लाइक नुसरत फतेह अली खान, सो ही हाँ कन्वीनियंटली सिंग्स नुसरत फतेह अली खान सॉन्ग. हाँ। पर उसके ऊपर बहुत लफड़ा भी चल रहा है। कभी द संघा शो को देखना, उसने बहुत बहुत पेला उस व्यक्ति को। मतलब गाथा तो अच्छा है, पर उसके कारनामे बहुत अलग प्रकार के हैं। तो मैं जो कह रहा था कि मैं देख रहा था कि तेलुगु का मैं ट्रेलर देख रहा था, तो एक व्यक्ति ने लिखा अच्छा किया कि गानों को पंजाबी में ही रखा, तेलुगु में ट्रांसलेट नहीं किया। फिर बोला कि क्यों तेलुगु में ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी भाषी भी तो पंजाबी गाने ही सुन रहे हैं, उनके लिए भी तो अलग भाषा है। तो फिर तेलुगु में आपको पंजाबी नहीं रखने का क्या कारण है? तो बहुत जन बोल रहे थे कि तेलुगु और पंजाबी दोनों का ये जो संगम है, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, गाने पंजाबी में चल रहे हैं और संवाद तेलुगु में। तो मुझे ये सब बातें बहुत अच्छी लगती है, जब आप भारत के विभिन्न भाषाओं को मिलाते हैं, दोनों के बीच का एक तारतम्य दिखाते हैं। तो वो मुझे अच्छा लगता है कि हम हमें सभी भाषा को स्वीकार करने की एक एक ओपननेस होनी चाहिए कि हम, मैं भले ही हिंदी भाषी हूँ, पर मेरे लिए पंजाबी भाषा भी उतनी ही प्रिय है, मेरे लिए तमिल भाषा भी उतनी ही प्रिय है। भले ही मैं समझूं नहीं, पर यदि हमारे किसी भी भारतीय भाषा का उत्थान हो, वो एक प्रकार से मेरे सभ्यता का उत्थान, उस भाव को आगे बढ़ाता है ये बात। और जो थीम्स है उसमें तो हिंदू थीम्स बहुत अच्छे से भरा हुआ है। जैसे मैं कुछ बातें बता देता हूँ, लोगों को संभवतः पता होगा। धुरंधर में जो धर्म शब्द का प्रयोग किया है, आप देखिए, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया, एक बार भी धर्म का शब्द रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में आया ही नहीं। वहां सदैव बोला पुरुषों का धर्म ये है, बलिदानम परमो धर्म, मैनलीनेस आपका मैनलीनेस। कर्तव्य, कर्तव्य क्या है आपका। फिर जब वो रणवीर सिंह को बुलाता है, वो अजय सन्याल, वो अपने कारखाने में या कहीं पे, तो भी बोलता है कि तुम्हारा धर्म ये है, अपना धर्म निभाओ। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि यही तो करना है, लोगों के जो साइकी है, जो एक
फ्रेमवर्क बन चुका है, यही तो प्रहार करना है कि धर्म को आप केवल रिलीजन के दृष्टि से मत देखो। धर्म सर्वग्राह्य सर्वोपरि है, धर्म के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। दूसरा है कि वो जो बात करता है फोन में कि अरे आपने तो हमारे एसेट को पकड़ लिया, अस्सलाम वालेकुम, ये वो। और जब उस संवाद का अंत होता है तब वो नमस्कार करके अंत करता है। मतलब बहुत ही सूक्ष्म रूप से दिखाया है कि इसको बोलते चालाकी। ठीक है, आपको ये बात स्थापित करनी है कि भारत एक हिंदू सभ्यता है। आप उसको खुल कर नहीं बोल रहे। आप कैसे दिखा रहे कि पहले पाकिस्तान का पलड़ा भारी है तो वो अस्सलाम वालेकुम बोल रहा है। ठीक है, संजय सन्याल जो भी था उसका, अजय सन्याल। ये पर पर जब वो देखता है भारत का पलड़ा भारी है तो वो बोलता है नमस्कार, या कोई भी, शायद पाकिस्तान का जनरली बोलता है नमस्कार। तो दिखाया नमस्कार, जा रहा है नमस्कार। कि हमारी संस्कृति की पहचान नमस्कार से है, और जो शत्रु की संस्कृति की पहचान है, या जो भी उनका संस्कृति क्या ही है, वो भी हमारी संस्कृति को चुरा उड़ा के घुमा फिरा दिया, वो अस्सलाम वालेकुम। ये सब, अब मुझे नहीं पता कि आदित्य धर ने इतना सोचा भी होगा या नहीं, पर ये सब छोटी छोटी बातें जो हमारे मन में बहुत प्रभाव डालती, कि एक बहुत ही आई सटनली ये थिंक बात डाल दी वो गई वाला पावर प्ले ही कि होगा ना, जो लास्ट में नमस्कार, दे एंडेड विद नमस्कार, नो, तो दैट वाज पावर प्ले। दैट वाज लाइक आई या एम दैट पोलाइट वाज बट आई डोंट हैव टू बी। या दैट इज पावर प्ले। पर मैं बता रहा हूँ कि इंडिया जब आ गया तो नमस्कार बोला जा रहा है, पाकिस्तान जब आ गया तो सलाम वालेकुम बोला जा रहा है। तो आप सोचिए, उसमें दिखाया है कि भारत की पहचान नमस्कार से है। ये क्लियरली मैसेज दिया गया कि हमारी पहचान नमस्कार और हिंदू परंपरा संस्कृति से है। ठीक है, ओपनली नहीं बोला गया पर सटली ये मैसेज दे दिया गया। फिर जो पंजाब को जिस प्रकार से दिखाया है, जिसमें जो पंजाब को जोड़ा है इस नैरेटिव में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अ, जैसे जब वो जसकीरत जा रहा होता है, उसमें बोलता है कि अरे तू क्या कर रहा है यारा, तुझे तो आर्मी में जाना था, ये तू क्या कर रहा है। बोला इस आर्मी में अगले जन्म में चले जाऊंगा, इस जन्म में मैं अपनी परिवार की रक्षा कर लूँ। तो इसमें जो पुनर्जन्म, कर्म, ये जो हमारा सिद्धांत है, कर्मा थ्योरी, पुनर्जन्म, उसको कितने अच्छे से दिखाया है। अगेन बहुत सटली, आप जो बोल रहे थे ना ईथॉस हमारा है, वो ईथॉस को बार बार पुश किया आदित्य ने। उसमें कोई बहुत प्रखर रूप से पूजा अर्चना करते हुए नहीं दिखाया, हिंदू धर्म को दिखाने के लिए। जो हमारे दैनिक जीवन में, दिन अनुदिन जीवन में हम जिस प्रकार से सोचते हैं, बात करते हैं, हमारे भाव जैसे प्रकट करते हैं, उसमें जो भारतीयता होती है उसको दिखाया आदित्य ने। और उसमें वेस्टर्न टेक्निक्स का भी यूज किया। ये यस। सबसे अच्छी बात है। He और used Western techniques, but the ethos has to be yours. यस, और ये तो हमको पता है कि रणवीर का जो लुक है वो जिस सोल्जर के ऊपर बेस्ड है, ही ऑब्वियसली पास्ड अवे लॉन्ग बैक इन 2009 और 11-12 आई गेस। तो वी नो दैट ही इज नॉट 9 only, right? So he's obviously not the Hamza Ali Mazari, but it's obviously a bit of it is based on him as well, and he had long hair. Now that guy himself, who comes from a very reputed military family anyway, he's obviously very much older than me. But can you believe that there is a huge chunk of India which has enough money in its hand to be urbanized in a different way, but even a section in that strata is patriotic as fuck, because this guy, that soldier, do you know, he was already a very good guitar player and synthesizer player. And think of how older than us he is in that generation, because when I was learning guitar, even at that point, rock music, guitar, these things were laughed about in Kolkata by people who today swear by fossils and Rupam Islam. But about 15 years before that, that soldier was already fluent in guitar, synthesizer, and therefore obviously very much in love with Western music, and then sacrifices his life for his country. That Yeah. is what I'm talking about, naming urban nationalism. Yeah, go ahead, Abhay. Yeah,
I या mean, मनी yeah. या Yeah, Shanton, Abhay, go ahead. मैं बोल लूँ, पहले पूरा कर लूँ। हाँ, जैसे मैं इसका कतई विरोधी नहीं हूँ कि आप वेस्ट से उनकी अच्छी बातें लेना चाहिए। हम लोग भी लिबर्टेरियनिज्म के बारे में बातें करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अमेरिका में दिखता है वो। पर अच्छे विचार लेने में कोई बुराई नहीं है। हम भारतीय रह सकते तब भी, ऐसा कुछ नहीं है। अ, अ, तो धुरंधर में यही किया गया है कि क्या एक प्रकार से आप नेशनलिज्म को, हिंदू इथोस को मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसे रखेंगे। जैसे मैं एक रील देखा, लड़की पूरी फेमिनिस्ट है, ठीक है, वो फेमिनिज्म की बातें करती है, और उसने एक रील बनाया था कि जब मैं दूसरे एक्शन मूवीज देखती हूँ जिसमें एनिमल वैनिमल को वो गाली दे रही थी कि इतने बड़े बड़े दाढ़ी और ये कैसे बाल बना लिए हैं, तुमको क्या साफ सफाई रखना अच्छा नहीं लगता, तुम पुरुषों को हिंसा करना अच्छा लगता है। पर मैंने जब वही हिंसा धुरंधर में देखी तो वो देखने में आनंद आ रहा है, क्योंकि उसका एक कारण है, ठीक है। तो धुरंधर ने हर व्यक्ति को आकर्षित किया है। जैसे और एक विषय बताता हूँ मैं, वैसे तो ये सब चैनल नहीं देखता, पर मैंने एक बार देख लिया था। क्या आई डीवा करके चैनल है, ठीक है, वो पक्का मतलब साउथ दिल्ली वाली जो लड़कियां होती है ना, उसका चैनल है, ठीक है। उसमें दो जन पॉडकास्ट कर रही थी, उसमें वो फैशन के बारे में बात कर रही थी कि वो धुरंधर के पुरुषों ने कैसे पोशाक पहने, कैसा हेयर स्टाइल था। मैन, दे वर मैड अबाउट मेन इन धुरंधर, मतलब पागल हो चुके थे धुरंधर के पुरुषों को लेकर के, कि अक्षय खन्ना कितना औसम लग रहा था यार, मैं तो पागल हो गई थी। रणवीर सिंह तो इतना औसम लग रहा था, ये वो, मैं तो उसके प्रेम में पड़ जाती, मुझे ऐसे पुरुष बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी कि एक मेल सेक्स सिंबल क्रिएट किया है धुरंधर ने, हिंदू मेल सेक्स सिंबल, एक नेशनलिस्ट Exactly. मेल सेक्स सिंबल। और वो जो शॉट है रणवीर का, जहां पे उसका पूरा बॉडी स्लोली जूम अप हो रहा है, ऊपर जा रहा है वो थ्रोन में बैठने से पहले, वो पूरा ही फीमेल गेज से है। वही मैं आदित्य धर का मुझे समझ में नहीं आता है भाई, जिसको मैस्कुलिनिटी इतना अच्छा समझ में आता है कि वो मैस्कुलिनिटी रिलेटेड सीन्स इतने अच्छे डायरेक्ट करता है, फिर वो एक वल्नरेबल सीन भी उतना ही अच्छा डायरेक्ट करता है, सैड सीन भी उतना अच्छा डायरेक्ट करता है, रोमांटिक सीन भी उतना अच्छा डायरेक्ट करता है। आई दीज डेज भाई रोमांटिक सीन तो छोड़, आई स्किप ओवर एवरी इमोशनल डायलॉग इन एवरी मूवी. In Dhurandhar 2, I do not feel the need to. In Dhurandhar 1, even I do. Dhurandhar 2, I do not feel the need to skip over any scene. But in Dhurandhar 2, even the action, because here's a secret: anybody who likes real martial arts, they don't like fake martial arts at all after realizing the fun in real martial arts, right? After that, you can't some people do go back to WWE, but most people can't watch WWE ever again after finding out that it's all fake. So I skip over most action scenes in action films as well. I like action films, but when the action actually starts, it seems like, okay, yeah, two guys are fighting, yeah, there's a lot of hiya, beating up, screams, and yes, please, yeah, skip, move on. Yeah, the fight is over, now let's see where the story goes. In Dhurandhar 2, even that won't happen, because the screw up that most directors do in directing long action scenes is that there is no story inside that action situation. There is a story, there is a beginning and end, there are 3 acts in every action sequence in Dhurandhar 2. Ranveer's Yeah. fight with Arjun Rampal, so many story beats happen throughout Yeah. that action scene, man. This is so beautiful stuff. वो शुरू होता है जब अर्जुन रामपाल उसको बोलता है कि तुझे पता है कि मैं फोन में क्यों बात करता हूँ जब ये लोग आतंकी लोग हमला करते हैं काफिरों की चीख सुनने के लिए, बहुत आनंद आता है। वहां से आरंभ होता है कि कैसे नीचा दिखाया जा रहा है तुमको तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। फिर जब उसको चाकू मारता है और बोलता है, बोला काफिरों का जल्लाद, अरे मेरे घंटे का जल्लाद। तो वो बहुत अच्छे से दिखाया है कि वो बैक एंड फोर्थ कैसे हो रहा है, कि पहले पलड़ा भारी है तुम्हारा, आपका क्या बोलते हैं, अर्जुन रामपाल का, और फिर एक काफिर उत्तर दे रहा है पलट के, कि उसका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, वो उत्तर दे रहा है पलट के, ठीक है। Yes. वो Yes. वो सीन्स बहुत अच्छे से किया गया है। फिर आप यदि वर्नरेबल और रोमांटिक सीन्स की बात कीजिए, जो यलीना और हमजा Yes, में, my God. Yeah. बहुत उसमें कोई किसिंग नहीं है,
तुमने कोई वल्गैरिटी या ऐसा कुछ नहीं दिखाया, फिर भी हम्म। वो सीन और डीप हिट करते। जब वो उसको अपनी सच्चाई बताता है तब भी, कि देखो यहाँ पर इतने लोग मारे गए थे, इतने लोग मारे गए थे, अब मेरी बात समझो। यस। फिर जो अंत में जो सीन होता है जहां पर वो फोन करता है पत्नी को, वो पकड़ा गया, पुलिस आ गई है, वो बोलता है मेरा नाम जानना चाहोगी। Yeah, I think they इतना really बढ़िया should ढंग not से have किया। added that dialogue यार। मेरा नाम जानना चाहोगी, just बोल दो कि मतलब for me best scene would have been कि she should have said Hamza and he should have said Jaskir, and that should have been the scene। वो नाम जानना चाहोगे वो तो that हो diluted the सकता whole है scene। वो मतलब मैं बोलूंगा वो थोड़ा बाल की खाल निकालने जैसा हो जाएगा, पर उसमें जो, चलो बाल की खाल मैं निकालूंगा, रुको रुको अभी रुको। हाँ तो निकालना चाहिए, आप लोग निकालिए, पर जैसे वो, मैं बोल रहा हूँ उसका उसका ग्रेविटी सीन का, उसका भीतर का दुख या कि अब बिछड़ना पड़ेगा क्योंकि अब पकड़ा गया है, या या तो वो मरेगा क्योंकि उसको टॉर्चर करके मारेंगे, या भारत उसको छुड़वाएगा भी तो यस बिछड़ना तो पड़ेगा ही। वो जो दुख है यस उसके चेहरे पर, वो बहुत अच्छे से यस। दिखाया गया है। फिर हाँ। उसका जो त्याग है उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जब वो अपना परिवार को छोड़ता है तो फोटो जलाता है सब। 2 अ, टाइम्स वो बार बार करना वो पड़ रहा है उसको। हाँ, वो वो आप देखिए, वो स्मोकिंग नहीं करता था, पर वो बोलता है कि इतना जी कर क्या करेगा, पी ले, तो वहां से वो थूकना चालू करता है। फिर वो जब वापस आता है भारत अपना काम करके, He फिर वो crushes the सिगरेट cigarette फेंक box. देता है। Hmm. अब देखिए इसमें आदित्य धर ने कितने सम्मान के साथ सिक्खी को दिखाया, क्योंकि ये Hmm. नियम सिक्की का है कि आपको सिगरेट और शराब नहीं पीना, वो सिक्की के लिए किया उसने। फिर और बहुत चालाकी से आदित्य धर ने क्या, मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आदित्य धर ने जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक सिख को रखा है और उसको एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर हिंदू मिलियू दिखाया। ठीक है, उस उसमें एकदम दिखा है कि अरे हिंदू और सिख तो एकदम आपस में गुथे हुए लोग हैं, इनमें अलग क्या उड़ी है। में भी तो विहान शेरगिल तो सिख ही था। शेरगिल सिख सरनेम है, राइट? इट्स अ पंजाबी सरनेम, आई डोंट नो वेदर अच्छा। इट्स सिख और नॉट, सम Oh, it can some be Hindu people as are well. Sikh, yeah, it can be Hindu as well. There are Okay, many okay. such Punjabi surnames which can be Hindu, Sikh both. Okay, Punjabi is a very integrated culture between Hindus and Sikhs. तो तो उसको बहुत अच्छे से दिखाया है कि सिक्खी इज अ पार्ट ऑफ हिंदू मिलियू, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट आउटसाइड द बॉक्स। Yes, हम दोनों yes, एक ही है अंत में। एक yes, प्रकार से आप यदि आप सिखों का इतिहास भी देखें तो वो एक प्रकार से हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा ही तो कर रहे थे ना, तो इसमें भी एक सिख yes, को ही दिखा है कि वो धर्म और संस्कृति और भारतीयता की रक्षा करने के लिए गए yes. और मुगलों का Uh, नाश करने के लिए। Yes. Now we'll have Shanton and Sroyan come into the discussion. First, we'll discuss whether how much they liked it, like Dhurandhar 2, etc. And then we'll discuss the urban nationalism aspect of that. That is, I think, promoted by Dhurandhar 2. But I'll just point out 2 things. One is this is my friend. The comment you can see on the screen is by my friend, my doctor friend, Dr. Snehal De. He's a very big doctor, but this is the guy who came on our podcast because he was the one who accurately predicted the 2024 Lok Sabha elections and BJP's outcome in that election in 2024. Okay, and he's pointing out a fact which is very important. Now we have a doctor pointing out good nutrition stuff. That yes, Ranveer's physique in that film has appeal because it's so believable. Okay, it's not dehydrated bullshit of John Abraham and Hrithik Roshan. It's so important. And people talk about body positivity and defend obesity, and now that we see Ozempic is the order of the day, not many people are defending obesity anymore. Every celebrity who used to defend obesity is now skinny all of a sudden. Okay, now wait, he commented another thing. Yeah, he's pointing out that it has a realistic appeal mostly because of the subtle fat. That is the point. Anybody who is not morbidly obese can achieve the look of Ranveer's physique in 6 to 7 months by going to the gym. You won't be actually as fit as an army guy, but you will look like Ranveer Singh. And that is so awesome. Now, before I bring in Shanton and Sroyan, I had another point since Abhay mentioned how Dhurandhar 2 brings along people.
That is what I'm saying. That is exactly what Kantara chapter 1 did as well, in a different way. Kantara, RRR, Bahubali, these are filled with very obvious Indic ethos and vibes. Okay, Sanskrit here and there, Bhagwa symbolism here and there, and Dhurandhar 2 has seemingly none of it. But both have those things layered beneath, and both of these two movies, at least Kantara chapter 1 and Dhurandhar 2, bring the country together in ways that have never been tried by the other film industries, at least not Bollywood at all. Because Kantara chapter 1, though, we know the bringing together of the Aryan cultures and the Anarya cultures. That scene where the tabla is playing on the one side and the tribal percussion is playing on the one side in the end of the Brahmakalasha song, and then they do their Jugalbandi, then they come together. The music actually joins together literally, because the tawil and the tribal percussions come together literally. They play the same things, and visually they come together at the same time. The drone shot shows that the heroine dancing in her Arya ways and the tribals dancing in their Anarya ways coming together. What a beautiful It's a message that has never been dared by any music industry, by any film industry in India ever. That is exactly what Dhurandhar 2 is also doing, but in a completely different way and with an urban language, but is achieving the same thing. Yeah, go ahead, Abhay, and then Shantan come in with the urban nationalism comments. वो जो आपने कांतारा की बात की ना, उसमें हमारा जो क्लासिकल कल्चर्स है, ठीक है, जो जिसको थोड़ा सा हाई माना जाता है, हाई स्टैंडर्ड का, और जो फोक कल्चर्स है, वो उसको साथ में लाया गया है कि फोक और क्लासिकल दोनों एक ही सभ्यता का अंग है, ठीक है। नहीं तो फिर कैसे इसको डिवाइड किया जाता है कि क्लासिकल तो ब्राह्मणिकल है और फोक है ट्राइबल वाले लोग का, तो उसको साथ में लाया गया कांतारा में। और जहाँ तक धुरंधर की बात है, और एक विषय मुझे बताना था कि हाँ, वायलेंस, इस पर बहुत बात होनी चाहिए। मैंने अभी लिखा था चैट पर कि व्हाई आर लेफ्टिस्ट, वामपंथी लोग इस ये धुरंधर में जो इस प्रकार की हिंसा दिखाई गई है उससे इतने असहज क्यों हैं, जबकि इससे भी भयानक प्रकार की हिंसा आपको मार्को में और हॉलीवुड फिल्मों में पहले से ही देखने को मिलती है, और उसकी ये बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक भारतीय हिंदू तथा कथित हिंदू राष्ट्रवादी को उस प्रकार की हिंसा करते हुए दिखाया है, और भारतीयता के लिए वो हिंसा करते हुए दिखाया। इनको हिंदू उग्रता से बहुत भय लगता है, और ये और यही तो है एक्चुअल अहिंसा, प्रिवेंशन ऑफ हिंसा। हाँ, और ये फिल्म उस हिंदू उग्रता का उत्सव मनाती है, उसको सेलिब्रेट करती है, जो हमारे राष्ट्रवादी उग्रता है, जो बंगाल में पहले देखने को मिलता था, जैसे अनुशीलन समिति और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनमें। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण भी कोई पढ़ेगा तो वो क्रूरता उग्रता देखने को मिलेगी, ठीक है। वाल्मीकि रामायण भी बहुत स्पष्ट है उसमें। तो इस बात से इनको बहुत डर लगता है। इनको ये चाहते हैं कि हम वो गांधी जी वाली बात में रह जाए कि अहिंसा, हम बड़े अहिंसक लोग हैं जी, हिंसा ही देखते जो समाज डर जाए ऐसा समाज बनाओ, हिंसा थोड़ा सा रक्त देखकर वो उल्टी कर दे ऐसा समाज बनाओ। इनमें कब से आ गया खून खराबा को इतना सहज मानना? ये नहीं चाहते कि हिंदू समाज वैसा बने, यस, जिसके लिए खून खराबा देखना सहज हो जाए। इसीलिए यस, हिंसा का और टेस्टोस्टेरोन का, मैस्कुलिनिटी का जो इस फिल्म में दिखाया। और व्हाई आर हिंदू नेशनलिस्ट कैरेक्टर्स बिकमिंग मोर डिजायरेबल फॉर वुमेन, जब इस प्रकार के मैस्कुलिन कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं। यस, उसका Shantan, yes, yeah, Shantan, did you watch Dhurandhar 2 again after the OTT release? Yeah, I did. Okay. So, I have a grievance with the first scene that you talked about. It might be a minute thing, but it was a sword in my eye because I am a defense geek. So, it was like, okay, he did everything how an army person should do. Okay, an army person who is either in a para brigade or at least completed his YOs. Okay.
Now the issue was when the portrait picture was being taken, no, during the first scene, the family picture. That is the NDA uniform. You don't learn such skills in NDA. You learn basically basic jumping, running, and all those stuff, which will help you in the IMA. Then you learn all the actual fighting skill in of army in either your YOs or in your unit, basically. You learn firing and all in India and IMA also, but that the special forces skill, the para. With a film such as Dhurandhar, I think that could have been tackled easily, much easily. Shantan, what And about the time that had passed between that photo shoot and by the time he finally decides to kill, then no, goes by and that gets the time, guns, then kills? yeah, Wouldn't have because his his friend, training have come in by then? no, because his friend also said no that he's training to join the army, and he also says that Pinda was saying no that I had a dream that you can be in army someday, in army uniform someday. So he was in NDA. That means he was training to become an officer. He would be an officer. So he at least should have done his YOs to get that training. That uh, plastering the this thing, AK's magazine. That those things are taught in the YOs only, if not in special forces. So that is one grievance. Also, I have a issue with why did actually he left. What was the need for him to leave his wife and children back there? I mean, he did not leave them, obviously. Jamil Jamali did, but what would have been the need? Either it was his love for his daughter that he needs to see her, but don't you think it would have made much more sense if he just sent his family with him to India, which is much more safer place because he is also an Indian, so Jamil Jamali. So those things are a bit of loophole for me. So why did this happen? Excellent Hmm. film, but those things Hmm. kind of uh, rub me in the wrong way. So Hmm. yeah, those things are there, and yeah, those things are there. I'll tell you if I come across something in my mind. Yeah. Soyan, what do you think Yeah, of urban nationalism and Dhurandhar 2? yeah, definitely. Firstly, I'll just, I'm audible, right? Firstly, I'll just point out a few things. Firstly, no direct eulogization of the religious aspect of religion and establishing it very well that in our system, religion is offshoot of culture, way of life, our worldview, and the norms and diktats come later. So obviously, if you see even the inception of the ideas of Bhagavad Gita, that was only placed in two occurrences in the very beginning of the movie. And they did not make any character say anything specific about that to propound upon it further. So it was like, अब हमने जो बताना था बता दिया, अब तुम इसको टेम्पलेट में डाल डाल के देखो कि क्या पे क्या सिनेरियो फिट बैठ रहा है. Similarly, there was this one scene when the Jews guy Alam, so he passes away and he's been shot, and then Hamza comes back to this tea stall, and the music that is playing, the background score that is playing, and the wordings there where he is being referred to as Krishna, who has now left Hamza. Or just kidding. So, which basically states that he was this guiding light to him, and now he is gone too, and what is to be done? But But don't you think yeah, Ajay I'll Sanyal tell you. was I'll yeah. tell you. And immediately after that, there's this scene where Hamza actually returns and meets Ajay Sanyal in that hotel. So, which basically also tries to tell us something very crucial. I don't know, I might be completely overthinking it, but Krishna is not one person. Our God comes to you in different times in different forms and provides you the support you need, and that keeps changing. So it's transgender, it's not just one particular individual, which is very similar to something that is also being discussed in actual Bhagavad Gita, where Krishna says, I am the source of everything, where he's not basically referring to I as the person, but as the consciousness. So that consciousness keeps shifting.
Secondly, the only probably direct quotation of any religious thing was of the Sikhs, where Ajay Sanyal explicitly mentions it of that thing when he was trying to inspire Hamza to join the security forces, which basically And also gives us, yeah, and that too, the quote is from Guru Granth Sahib, right, not a Hindu quote. absolutely. He took Absolutely. a And Sikh that's exactly quotation. what I'm saying. That the That is why you see the way he has obvious, shown that Sikhi is a part of the Hindu milieu. Those scenes where he's quoting from Guru Granth Sahib and not from a Hindu text, he wants to show that this this culture is the same culture, part of the same system. Even the Sikhi is part of the same system. Yes. It's Yeah. not yeah. different. Yeah. So that thing was there, and so that is the only time where the main protagonist explicitly mentioned to a religious scripture, and that is not the traditional Hindu thing, which basically indicates that it is an umbrella, and you all are under that umbrella, and we are not so much bothered about what religion you are. Rather, it's a thing about cultural and national integrity. So again, the sense of a national identity, an Indic identity, that was being propounded for now. And obviously there is these tributes and stuff to Batman. They have repeatedly done it for Godfather as well, and there's this specific scene where I guess it's a juxtaposition where Ranveer is playing with his child, and immediately after that he has to leave and all the things are going, and the wife is standing next to him. So that exact same invocation of the idea of men have to be careful, and they are probably trying to show that how much careful you can be, or how much you can safeguard your personal interests where you are fighting for a personal motive of your gang, of your clan or family, which is what is the scenario in Godfather, compared to when you're fighting for your nation, you're on national duty. So that was one very interesting thing that was being lined upon. So where exactly is the boundary? How much left you have to draw the boundary, or right, whatever, in order to differentiate between two scenarios where you're actually invested in something big for a personal agenda and for a national agenda. The fourth most important thing is obviously in Firse, which is that is portion by Ramana Balachandra, where that has been repeatedly shown in the film, where they're actually trying to express that there exists something which is native to this land beyond just religion. It is the culture, it is the music, it is the ethos. So that was how it was being pushed. It was not pushed on the face of it with any slogans, but subtle things which are traditionally rooted in this particular culture. And it came in the very end. So by the time you have traveled everything, and it's sort of like a homecoming in terms of our culture as well, and in terms of the real character as well. So they traveled everything, they Also, saw everything. And there's another very important thing. Every time, particularly when Zahur Mistri was killed. So, and Ajay Sanyal was on FaceTime, and they were discussing it, and he said that thing, Jay, itne saalon se I'm here waiting to hear something from your dialogue. It is probably a direct tribute, or let's say invoking the thing which was said in Sardar Udham, that Indians take down their enemies after decades. It was being explicitly mentioned over there, where essentially Sardar Udham waited for all these years and finally took him down. And that's exactly the same idea that has recurringly occurred in Dhurandhar. So that was there. And well, I mean, there's so many things I have to actually pressure my brain to remind myself what else to say. But and yeah, obviously the last scene. For example, a lot many people said that why did not Ranveer meet his mother, or Hamza, or Jaskirat, whatever you want to call him, Jaskirat meet his mother. But then there's so much left to the imagination. For example, if he returned, he would also have to explain where he was all these years, but also his sister's husband is now gone. And nobody really spoke of that because they had two children. And that guy also mysteriously never returned, which is very similar to how Hamza also was kidnapped and never returned. So probably if they had met, they would also have to explain not the missingness of one character but two characters. And I'm not sure if, I guess, obviously these people did not know that the friend or the sister's husband was doing something shady. So that was another aspect, that two people who went missing for very different reasons. And one of them, he actually got killed. The other could return, but still could not because he was still bound by duty.
while the other was bound by personal interest. Okay. This guy is after me for the last from the last live stream. Yeah, so that was then. I'll just keep catching up. I mean, I don't remember all the things I wanted to say, so I'll just pass the baton to Yeah. someone else. If I remember something, I'll just Yeah. come back. So Yeah. yeah, so I just want to say Yeah, go ahead, this Shandan. thing. Yeah, so I just wanted to say that this thing that no matter how long it takes, India will get to you. So this thing, this rhetoric is very, very close to our home right now. I mean, some people thought themselves of invincible category, right? Like nothing can happen to them, and so always think that okay, nothing can happen to me right now, but one can happen in future. For example, Zahur Mistri was happy for 20 years or so. He got killed in 2020 or something like that. No, so India will get to you. Maybe it will take 2-3 generations even. I mean 2-3 governments even. 2-3 elections. So India will get to you. So karma will get to you basically. So this is a thing I noticed. Also, I noticed this thing also that they did not needed to make Pakistan some hellhole sort of a situation. Those things that they showed in Pakistan are very common in India as well. The Liari situation that they showed, I mean, we know many places that are like that in India only. So yeah, they did not needed to make Pakistan a evil place. Yeah. So they There made was Rahman Dakat's relatable also. Rahman Dakat's love for his wife was a great nuance to show that he is not the way commies think, Hindutwadis think of, or Indian nationalists think of Muslims is not what Aditya Dhar showed. He showed that yes, Rahman Dakat can be a criminal mafia guy but loves his wife, and even Major Iqbal loves his daughter who has Down syndrome and apparently has a toxic father as well. I don't know. Many people said this thing that they should not have shown Major Iqbal in a softer light, like he loves his daughter and all. That's how you end up People, writing bad characters and boring characters. When you write yeah, one-dimensional characters, people think everyone is one-dimensional evil all the time character. or good all the 24 That is hours a day. exactly Uh, the No one is nuance. like I that. have He's, something to say. he, I Yeah, have Major something to Iqbal say is on so this. fond of his own Here, daughter, and then later he goes on in the end of the movie to say all those horrible things about other people and other culture and other cultures' women. So that is the nuance in That is that, how and people are. that Yes, is the exactly. most uh, endearing part. I have something to say Yeah. on this. I guess Anand had said it कि ये जो होते हैं ना आतंकी ये लोग सबके सब ऐसे नहीं होते कि दाढ़ी रखे हुए हैं बिना मूंछों के और सब जगह गाली दिए जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये सामान्य मनुष्य होते हैं जिनके मन के भीतर में बहुत कट्टरता होती है। वैसे ही दिखाया है कि रहमान डकैत हो या मेजर इकबाल हो, ये सामान्य लोग हैं, अपने परिवार के साथ सामान्य आचरण करते हैं, And that is तो what भीतर में कट्टरता है। the Chhava director also understood so accurately. Remember when we used to study Aurangzeb from different sources from way before Chhava even was thought of, we came to the conclusion that Aurangzeb was not your loud jihadi fucker. He was not going around saying "Maro was Busri wale wahan pe hai kafir." He was a chill, calm guy. He used to sewing topis for poor Muslims, playing his veena. But he also knows that yes, we have to kill that kafir. He's an asshole. He's not Muslim. Yeah, do kill him. Go. Yes, he can be calm about it. People think bad people are loud, ugly, and will do bad and ugly things, loud things all day, yeah. 24/7 with everybody. In appearance also. I mean, they are also, but in appearance and they behave with people themselves. भाई पर का साउंड में इशू। वास्तव में हमने देखा था कि ऐसे इलाके में, तो मैं बताता हूँ आपको। Abhay, your तो sound is सुबह gone. Yeah, हेलो, it's back. It's back. Yeah, go ahead. हाँ, तो वास्तव में कैसा होता है पता है? मैं जब एक जगह रह रहा था तो मेरे रूममेट भी थे हैदराबाद से। तो वास्तव में लोग अच्छा व्यवहार ही करते हैं एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम मुस्लिम आपके साथ आएगा, अबे तू ये है वो है वो है, नहीं, अच्छा व्यवहार करते हैं। आपके भी मुस्लिम लोग से बातचीत हुई होगी,
कोई बुरा व्यवहार नहीं करता है। समझ में तब आता है जब खुरेद खुरेद के आप अंदर उनके मस्तिष्क में घुसते हैं, वो आप उनसे संवेदनशील प्रश्न करने लगते हैं उनके मजहब के बारे में, बहुत सारे जो संवेदनशील विषय है उनके बारे में, जैसे गाजा में क्या चल रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, तब आपको दिखता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। कोई होता है जो एकदम स्पष्ट रूप से बोल देगा, कोई थोड़ा टाल मटोल करेगा, बोलेगा हाँ वो सब हो रहा है, वो तो होता रहता है, देखो गुजरात में भी क्या हुआ, तो वो ऐसे घुमाएगा बात। आपको उसमें समझना है कि इसके मन में क्या है। कोई भी ऐसा नहीं होता है कि स्पष्ट रूप से अपने पत्ते खोल दे, ठीक है। बाहर से सभी अच्छा व्यवहार करते हैं, वो धीरे धीरे भीतर का जो मन में जो भीतर में रहता है वो बाहर आता है। कोई कोई वर्ग ऐसा होता है जो मन के भीतर में पूरा ही रख लेता है कि इतना डर है कि एकदम ही बाहर ना आए, और कोई कोई ऐसा हाँ होता है जो अवसर के खोज में रहता है कि कब हमको अवसर मिलेगा तब हम अपना रंग दिखाएं। हाँ, एंड देयरफॉर कौमियों का धारणा ये है कि जो लाउड है, जो खराब व्यवहार कर रहा है, बर्ताव कर रहा है 24/7 हर किसी के साथ, सिर्फ और सिर्फ वो जिहादी है, बाकी और कोई जिहादी हो ही नहीं सकता. That is the misconception that commies need to be corrected upon. Okay, Skanda is saying there is a table fan sound that was coming from Shantan. Whenever he's muted, that sound won't be there. Okay, he's left for now. Now we'll get into Bengal politics. Unless Shah, you have something to add to the urban nationalism angle of Dhurandhar as well. Unless Yes, yes. you do. Okay, go Just ahead. two lines. The entire film is offering everyone with something, where they are actually sending a message of resilience that the non-urban class has to the urban class, and a message of channelization that the urban class understands better to the people who just get involved with other kinds of things to express their concerns. That is obviously there. And another thing, I guess, which needs to be highlighted is when actually Ajay Sanyal went to the senior police official of the of Uttar Pradesh, because even at that point the election was not sealed or not done or not conducted, and this guy went out of line to actually get Atiq Ahmed arrested, which is something very similar. I found it very funny of exactly what transpired in Bengal. And suddenly, just when the people had actually got a hint of what is going to happen or what is coming forward, uh, they became, very courageous all of a sudden and started behaving in a very different way than they were, let's say, a few months before that. So that needs to be pointed out. It basically tries to say that how much the individuals of the system is binding the individuals to not perform their duties honestly, but probably someday somewhere if a threshold is being crossed when they can do something substantial with nobody above them to suppress their actions, they will act. Yeah. Now, coming to Bengal politics, it's our home, and yeah, bhai, go ahead. अरे After यार that, मैं we'll come back. बोलने वाला था पर ध्यान से निकल गया। ठीक है, बाद में याद धुरंधर, हाँ आने से बोल धुरंधर में, देना. हाँ अब ओके याद ओके. आ गया। हाँ. धुरंधर की और एक बात है ना कि बच्चों के लिए तो ये फिल्म नहीं है, तो बच्चों की बात नहीं कर सकते, पर जो 18 के ऊपर है, ऐसा कोई एज ग्रुप नहीं है जिसको पसंद नहीं है। मेरे पिताजी को इतना अच्छा लगा, जबकि उसमें इतनी गाली गलौज है, ठीक है, हिंसा है। मेरे पिताजी हाँ को वो बहुत अच्छी लगी, वो देखते रहते हैं। हाँ. अभी हॉटस्टार पर आ गई तो वो देखते हैं, हम्म. उनको मजा आता है वो फिल्म देखने में। या. फिर विमेन को बहुत अच्छा लगा। ऐसी फिल्में सामान्यतः होती है कि अरे महिला को ये फिल्म अच्छा लगेगा, इसमें इतनी मार धाड़ हिंसा, वो भी क्रूर हिंसा दिखाई है, उनको भी अच्छा लगा। यंगस्टर्स को भी अच्छा लगा, वर्किंग प्रोफेशनल को भी अच्छा लगा। ये पहली ऐसी फिल्म है जो हर वर्ग के लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। हाँ. और और एक बात है कि अंत में जो दृश्य दिखाया है ना, उसमें इसमें बहुत अच्छा से दिखाया है कि पाकिस्तान के नाम पर एक विशेष प्रकार की मानसिकता को उजागर किया गया है। नाम पाकिस्तान का लिया गया है, पर वो जो मानसिकता को उजागर किया गया है ना, वो मानसिकता भारत के भी कई क्षेत्रों में है, वो दिखता है। और वो बहुत अच्छे से किया गया है। जैसे अंत में जो दृश्य है, जो जो संवाद बोलते हुए दिखा है, अबे कहाँ भाग रहा है जिहादी, अबे तेरी महिलाओं को माले गनीमत बनाऊंगा, बाजार में बिकेंगी,
ये सारे संवाद दिखाना जो मुगली मानसिकता थी, वो उसके लिए गूदा चाहिए, गट्स चाहिए, जो आदित्य धर ने किया, वो भी बॉलीवुड में। आज आज ये स्थिति है कि रणवीर सिंह के पीछे सब पड़े हुए हैं। वो फाइस ने उस पर नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव लगा दिया था, और क्या क्या चल रहा है भाई। ऐसी फिल्में बनाने के लिए बॉलीवुड में बहुत साहस चाहिए। ऊपर से दाऊद इब्राहिम को एकदम ओपनली दिखा देना, जिसका पूरा धाक रहा था बॉलीवुड पर इतना लंबा समय तक, उसको एकदम चूहा बना के दिया। तो और ये फिल्म धुरंधर बहुत सारे 2 में जितने काइंड ऑफ ट्रेड सीक्रेट्स दिखाए गए हैं इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के, तो उतना अगर करने का साहस या फिर परमिशन कुछ, मतलब धुरंधर 2 को जो सीबीएफसी से जो कट्स मिले अल्टीमेटली, वो कट्स में भी जितना बैलेंस है वो भी सीबीएफसी और किसी को नहीं देता है. तो आई एब्सोल्युटली बिलीव एमईए डेफिनेटली हैड इट्स ब्लेसिंग्स बिहाइंड दिस फिल्म. Therefore, I believe right now we probably do not have that many, or maybe not even a single asset in that region anymore. Therefore, they allowed Aditya Dhar to make this movie, allowed him to say these things, show these things, and they released it at a time which I think is very significant for the politics of that area, and we will never know what is exactly going on inside the politics of that area. But MEA definitely knows, and I think they unleashed this movie on them to make them fight amongst each other now as much as possible. Now go kill yourself and suspect each other of being Indian spies all around. Yeah. To create Yes, and ever since that, every trust single deficit. person that is associated with some organization or other has been dying continuously. I guess some 7 or 8 army commanders have died in the past 1 or 2 months. And there is another thing. They have Last bit been I'll able just point to out. create. So, They have been able to create the trust deficit among various people or various interest groups in Pakistan. That is what this film has done. So Yes. this is an incredible psyop operation. Yeah, In yeah. some last ways. thing, It's a that psyop it operation. was only revealed in the very end that Jamil Jawadi had been serving over there for 45 years. And people might be thinking, okay, so he was this odd, creepy guy who was collecting information, but he was trying to do actually much more. So if you see in Dhurandhar 1, he had actually made all sorts of arrangements to get Rahman the Cat killed. And that was only being postponed because Hamza had a better line and to do something even greater. Yeah. But otherwise, it was not just he was this normal guy, very harmless, who was only collecting information. He had made all sorts of plans without actually showing any sort of involvement or incentive in getting one killed. Completely firing shoulder from some other person's behind some other person. But he would have actually got the job done. It was only interrupted because there was a better plan coming. So that is also there. Yeah. Okay, now we get to Bengal, and we will discuss mainly the defections that are happening, and we will touch upon, even though we are on the other side of it, we will touch upon it. But the mainstream Bengali news channels are not taking this up at all. The anti-encroachment eviction drives that happened last night in Jadavpur. What all was actually destroyed, how much are we in favor of it, against it, etc., and the lathi charge that happened because of it. And famous actor, theater worker Joyraj Bhattacharjee, some Brahmin surname, he got his skull cracked as well. And I really like him as an actor. He played Riksha in Gandu, and he played a theater actor or a theater director in Tasher Desh, both two of my favorite movies from Q. But yes, he's a far left commie, and he got his head cracked to save a bunch of hawkers in Jadavpur allegedly. But firstly, in Bengal, the quote you must remember today is that victory tests competence and defeat tests conviction. Okay, we all knew that Trinamool is probably going to go away. I believe Trinamool will be made to be alive some way by the deep state, etc. Right now, whatever is by the look of things, even they probably have given up on Trinamool. Today, Mamta met with the India Alliance. They had a serious looking discussion in Delhi, when the rest of her party men and women are going about hanging around with Shuvendu and Ritobroto, who is making a different Trinamool of his own. And this is an absolute nightmare for Mamta. And
This is why I called this controlled demolition of Trinamool. This is not Trinamool falling apart randomly. Someone is going on tightening and loosening the specific relevant screws in order to make Mamta and Abhishek completely powerless, wealthless in every sense of the term. Okay, they are not powerful and wealthy former ministers who are now facing the brunt. They are also going to become powerless and wealthless random, excuse me, random, or at least on paper, random citizens who will face the brunt. This is an insanely good, at least insanely effective plan, based on the metrics of whatever the guys people doing it, whatever they want. We will discuss how much is a controlled demolition of an opposition or a controlled opposition good for the health of democracy. That's what we will get into. But one key insane thing that happened today is that Shukhendu Shekhar Roy, a very senior respected man, everybody in all political aisles respects him. He former Rajya Sabha MP as well. He also quit Trinamool today. Excuse me. And as a reason for him quitting TMC, he presented that rapists, thieves have taken over the party. Okay, that is insane. You see, therefore, power is power, regardless of who holds it. But the moment these powerful people or institutions or political parties lose access to the mode of distribution of resources, which is there, first of all, in a very distorted way. Its existence itself is a distortion, is a corruption. You lose access to that, all of a sudden you are nobody. And therefore, the key libertarian argument, no matter what degree of libertarian you are, the key libertarian argument is that when you with great powers comes great responsibility. This is a quote from Voltaire to Spider-Man, but I believe it's actually wrong. The real phenomenon is with great responsibilities comes great power. And when you outsource all your agency and your ability to acquire wealth, income, resources, anything, to a third party non-stakeholder who is stakeholder in corrupted ways, then you give all the responsibility also to that person, and that person will definitely treat you like a slave, because you consensually became his slave. You told him, you take care of every problem that I have, you take care of every good thing that can happen to me, and then you expect that person to go on doing only nice, cute social worker things. And this is another sad aspect of Indian politics, where every party runs on the shoulders of those bhalo kakus in every party. Okay, and those bhalo kakus are wasting their and the country's potential. They give hours and hours of free service in the name of social work because they believe in the ideology of their own party, and that only contributes to furthering the claims of socialism. See, at least this person got that freebie, but that happened because somebody else paid the taxes of the bureaucrat handling that. Somebody paid the taxes for the MLA, sitting MLA of that region, and somebody did not pay a single penny to all those bhalo kakus who also ran point on that, in that situation, who ran all the handling of the freebies, noting down the names of the people in the neighborhood, etc. The bhalo kakus, or even the evil kakus who probably were looking for a way to for a chance to steal some money. They have given hours of free service with the hope of either good of Bengal, the good of the victory of their ideology, etc., or simply the fact that they will be safer and powerful once their party comes back to power again, because they gave those hours of free service. But that hours of free service should not go into this horse shit. This is happening because of socialism, and socialism stands on the shoulders of these people. These people are giving all these hours of free service, and only then these freebies are getting delivered. These freebies are not getting delivered for free as well. Anyway, Abhay or Swayan, whoever wants to come back, what of Trinamool, what of Shukhendu Shekhar Roy, and what of Shubhendu running? I think it's Shubhendu doing a controlled demolition of Trinamool and not letting it happen organically. Who wants to come first? Anyone can go first. Okay, I Abhay, will go Abhay, come in. first. So this is pure शुभेंदु. I would say ये शुभेंदु अधिकारी का ही करामत है, क्योंकि ये वही कर सकता है जो बंगाल को बहुत अच्छे से समझता है. ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जानते थे कि प्रत्यक्ष रूप से तृणमूल के कुछ लोगों को भाजपा में सम्मिलित कर लेने से
बहुत भयंकर बवाल होगा। पर केंद्र में भाजपा को 2/3 बहुमत चाहिए, क्योंकि वो डीलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन लाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लाएंगे? तो वो देख रहे हैं कि कैसे तृणमूल के भीतर ही उनमें झगड़ा लगाया जाए, और कहीं ना कहीं ये लोग एनडीए को बाहर से समर्थन दे दे। जो हो रहा है, एनडीए को बाहर से समर्थन दिया जा रहा है, बीजेपी में नहीं जुड़ रहे हैं पार्टी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एनडीए को बाहर से समर्थन दे देंगे तो वो जो 2/3 बहुमत है वो भी हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा, और तृणमूल भी टूट जाएगा। हम लोग सोच रहे थे कि क्या ये लोग क्या तृणमूल को अपना विपक्ष बना के रखेंगे, जिससे वो एक हल्का विपक्ष इनको मिल जाए और वो वामपंथियों से ना लड़ना पड़े। मुझे लगता है कि ये जो हमारे मन की शंका है वो अब झूठी सिद्ध हो रही है। अब वामपंथी धीरे धीरे मुख्य विपक्ष बनेगा बंगाल का, क्योंकि जो जादवपुर में जो लड़ाई की, चलो मारा पीटा जो भी किया, उसमें ये तो दिखा कि कौन लड़ रहा है सरकार के विरुद्ध। सरकार के विरुद्ध तृणमूल नहीं लड़ रही है, सरकार के विरुद्ध ये वामपंथी दल लड़ रहा है। तो वो तो एक प्रकार से स्थापित हो गया है कि अब हमारा मुख्य विपक्ष वामपंथी ही होगा। और मुझे लगता है शुभेंदु अधिकारी ने इसके लिए भी तैयारी करके रखी है कि इनसे निपटना कैसे है। क्योंकि मैं उस व्यक्ति को ऐसा नहीं मानता हूँ कि उसने कर दिया और उसको पता नहीं है कि वामपंथियों से निपटना कैसे है। उसको नैरेटिव बनाना बहुत अच्छे से आता है। शुभेंदु अधिकारी खुद बहुत जबरदस्त है नैरेटिव बनाने। जैसे उस व्यक्ति को उस व्यक्ति ने सबसे पहले जय श्री राम को सामान्य किया बंगाल में। जिस जय श्री राम को बाहरी माना जाता था, वो एकमात्र शुभेंदु अधिकारी के कारण हर एक बंगाली के मुंह पर है। जब भी कोई शुभेंदु अधिकारी को देखता है। अबे हम्म, Samanya in Hindi means common. In Bengali, Samanya means very unimportant and insignificant. तो जैसे हमको सामान्य हाँ नहीं एक, किया है, कॉमन प्लेस किया है। हाँ हाँ, तो दोनों ही है। ऑर्डिनरी भी यूज होता है, सामान्य कॉमन भी होता है। सामान्य भावे एटा बोला है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसको बहुत आम कर दिया है लोगों ने। चलिए, आम शब्द या बहुत कॉमन कर दिया है। आज कोई भी शुभेंदु अधिकारी को देखता है ना, तो जय श्री राम ही बोलता है। आप देखिए, मोदी जी ने भी जय श्री राम बोलना छोड़ दिया, पर शुभेंदु अधिकारी ने और जय श्री भाई राम बोलना नहीं छोड़ा। बंगाल चीफ मिनिस्टर एक लड़का हर दिन तिलक लगाए बैठ रहा है चीफ मिनिस्टर के हाँ, सीट पे। उसको नॉर्मलाइज कर दिया इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने गौ सेवा को नॉर्मलाइज कर दिया बंगाल जैसे जगह पे, जहाँ पर इतना लिबरलिज्म और इतना बोला जाता है कि गाय खाना तो भाई लिबरलिज्म की निशानी है, और ये तो बंगाली परिचय का अंग है कि हम यहाँ पे गाय भी खा सकते हैं। उस व्यक्ति ने इस्कॉन में जाके गौ सेवा की उस दिन जब बकरीद था। बाप रे, इसके लिए अलग प्रकार की बुद्धि और अलग प्रकार का समझ चाहिए करने के लिए, जो शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। इसीलिए मुझे इस व्यक्ति पर पूरा विश्वास है, क्योंकि ये तृणमूल में रहा है और ये जानता है कि इनसे निपटना कैसे है। ये वामपंथियों से भी निपट चुका है जब ये तृणमूल में विपक्ष के रूप में था। तो इसको, मुझे लगता है इनको ये भी पता है कि वामपंथियों से कैसे निपटना है कहीं ना कहीं। और इन्होंने नैरेटिव में, आप देखिए, धीरे धीरे ये स्थापित कर दिया, ये बोल बोलकर, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल के प्रतिष्ठाता है। ठीक है, ये जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू होमलैंड था, ये हिंदुओं के लिए होमलैंड बनाया गया था। ये बातें धीरे धीरे लोगों के मन में बैठाते जा रहे हैं, और कोई विरोध नहीं कर पा रहा है, कोई वामपंथी विरोध नहीं कर पा रहा है इस बात का। और अभी मीडिया और ने तो पूरा का पूरा पूरा ब्लैकआउट कर दिया है वामपंथियों को। देयरफॉर मैंने सोचा था कि कुछ तो भाई बवाल होगा पॉलिटिकली। भाई कुछ पॉलिटिकली फॉल आउट हुआ ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है जादवपुर में क्या हुआ। हाँ, फेसबुक में जो है उनको पता है। इट हैज नो रिलेवेंस इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, क्योंकि वामपंथियों के मैंने पोस्ट भी देखे, वहां पे कमेंट सेक्शन में भी उनको बड़े बड़े गाली मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि अचानक से सिंपैथी उभर के आया, सारे बंगाली फिर से एकदम प्रो हॉकड़ी बन गए, ऐसा भी नहीं है। पूरा फ्लॉप शो हाँ, चल रहा है लेफ्ट में। इतना एंटरटेनमेंट जो शुभेंदु दे रहा है अपने अच्छे कामों से, अपने ट्रोलिंग से, अपने स्ट्रॉन्ग कामों से, टॉलीवुड की वैसे ही खटिया खड़ी होने वाली है अभी। और और क्या है शुभेंदु अधिकारी का, कि वो ये भी एक विचार स्थापित करने में बहुत सफल हो रहे हैं कि बंगाली संस्कृति मतलब हिंदू संस्कृति।
जब हम बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं तो हम सनातनी परंपरा की ही बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति इसको भी स्थापित करते जा रहा है, ये बात इतने अच्छे से पूरा नैरेटिव मैनेज हो रहा है ना, मैंने ये भाजपा की ओर से कभी नहीं देखा कि इतने अच्छे से कोई नैरेटिव को मैनेज कर रहा है। ये तभी मैं बोलता हूँ ना, मुझे ऐसे नेताओं पर अधिक विश्वास है जो भाजपा संघ से नहीं है, पारंपरिक भाजपा संघ से नहीं, जैसे शुभेंदु अधिकारी या हेमंत बिस्व शर्मा। ये लोगों ने, हेमंत बिस्व शर्मा ने भी तो नैरेटिव स्थापित कर दिया कि असमिया संस्कृति मतलब सनातनी संस्कृति, उसमें सनातनी बंगालियों के लिए भी स्थान है, जबकि असम में जब वो लोग विरोध करते थे बांग्लादेश से आए हुए लोगों का, तो वो केवल मुसलमानों का विरोध नहीं करते थे, वो बांग्लादेशी हिंदुओं का भी विरोध करते थे। पर हेमंत बिस्व शर्मा ने वो एक संतुलन बना दिया कि नहीं भाई, जो हिंदू हैं बंगाली बोलने वाले वो आप ही के लोग हैं, इनका विरोध मत कीजिए, ये असमिया संस्कृति का सम्मान करने वाले लोग। और ये वेस्ट क्योंकि बंगाल डे हिंदुओं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बर्थडे पे करना 20th जून, नहीं नहीं, वो उनके बर्थडे पे है कि वेस्ट बंगाल वाज फाउंडेड ऑन दैट डे, आई फॉरगॉट, बट एनीवे it's related to Shyama Prasad Mukherjee, and that's very important because most of Bengal, especially liberal Bengalis, don't know that West Bengal is supposed to be even a Bengali Hindu homeland. They do not know Shyama Prasad Mukherjee's contributions to it, because I didn't know about these things until 2-3 years back. So absolutely nobody in rural circles knows about these things, and that the discourse surrounding these topics is going to start now because of the 20th June celebrations. People will wonder, why 20th June all of a sudden? Why not Netaji's birthday, etc.? Why 20th June? And then this conversation starts. आप देखिए वो कहाँ का है, तारकेश्वर। तो अब बंगाल का जो आध्यात्मिक धार्मिक जो मर्म है उसको भी जागृत कर रहे। अब उन्होंने ये घोषणा भी कर दी कि बंगाल का जो भी धार्मिक स्थल है, जैसे कि आपके काशी में उसका संस्कार हुआ था, या जो भी नवनिर्माण हुआ था, या जीर्णोद्धार हुआ था, वैसे ही हम बंगाल के तीर्थ क्षेत्र को भी जीर्णोद्धार करेंगे। तारकेश्वर हुआ, तारापीठ हुआ, आपका कालीघाट हुआ, सब जगह गंगा सागर हुआ, वो सब का हम जीर्णोद्धार करेंगे, उसको हम सौंदर्यकरण करेंगे, उसको अच्छा बनाएंगे, जैसे अयोध्या काशी को किया गया। तो ये व्यक्ति अलग ही स्तर पर लेके जा रहा है बंगाल के चर्चा विवेचना को। अब ये है कि क्या शुभेंदु अधिकारी पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, या एक इकोसिस्टम को छूट देते हैं कि अब समाज में भी ये बात फैले, आप इकोसिस्टम बनाओ, इंटेलेक्चुअल चर्चा करो इस पर, हमने अपना काम कर दिया, अब आप आगे बढ़ाओ उसको। क्या शुभेंदु अधिकारी वो करते हैं, या सब कुछ अपने ही नियंत्रण में रखते हैं? ये एक प्रश्न है, क्योंकि अब मुझे वामपंथियों का भी प्रभाव उतना नहीं दिख रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा है कि अरे तुमने तिलजला में क्या उखाड़ लिया, तुमने जादवपुर में क्या उखाड़ लिया, गवर्नमेंट ने मार पीट दिया। नहीं तो फिर तो ऐसा होना चाहिए कि बीजेपी की सरकार यदि ऐसा कुछ करे कि किसी का माथा फोड़ दे, तो पूरे देश में बवाल हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी पर इतने दृष्टि गड़ाए लोग बैठे रहते। पर यहाँ पर बात ही नहीं हो रही, कौन मार खा गया, हॉस्पिटल में चला गया, माथा फट गया, कोई चर्चा नहीं है। कोई तो कंट्रोल कर रहा है ना इस नैरेटिव को, तभी ऐसा हो रहा है। और मुझे लगता है वो शुभेंदु अधिकारी ये को अच्छा नहीं बेंगोली न्यूज चैनल्स ने जो फ्लिप मारा है, इसे ही मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट बोलते हैं। अभी तक ये लोग तृणमूल के लिए कंसेंट मैन्युफैक्चर करते थे, अब बीजेपी के लिए कंसेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मगर और ये भोसरी वाले अपने प्रोफेशन से हटे नहीं, इनका प्रोफेशन जर्नलिज्म है नहीं, इनका प्रोफेशन अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट ही है। हाँ, या भाई गो अहेड, देन श्रायन। हाँ, मैं एक छोटी सी बात बोलूं, और सबसे बढ़िया बात है इस सरकार की कि इसने पिछले जितने भी दल थे वो गुंडागर्दी से, तोला मनी, कट मनी, महिलाओं पर अत्याचार करके, घर में लूटपाट करके, मारपीट करके करते थे। ये जो सरकार है, इसने अपने कार्यकर्ता को बोला कि दूसरों को मत मारो पीटो, कोई हिंसा उंसा मत करो, हम लोग हैं। अपने सत्ता का प्रयोग करके इसने किया है, पूरे लीगल ढंग से कंट्रोल में लाया। और सब बोल रहे थे कि बीजेपी इसीलिए बंगाल में नहीं जीतती है क्योंकि बीजेपी उतनी बड़ी गुंडा पार्टी है नहीं जैसे दूसरे है। बीजेपी में वो गुंडत्व नहीं है जितना दूसरों में, ठीक है।
पर बीजेपी ने दिखा दिया कि बिना गुंडा बने भी किया जा सकता है, नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये मानना पड़ेगा, ये जो इसे किया ही है। तो स्टेट क्राफ्ट कहते हैं, इसे ही स्टेट क्राफ्ट कहते हैं। स्टेट क्राफ्ट के अब नीचे अगर जाओगे तब सिर्फ लियाड़ीबाजी होगा, जो बंगाल में चल रहा था। तो लाइक समवन इज सेइंग हियर के हाँ, राइजिंग स्पिरिट इज सेइंग के आज ओके, टुडे इज एन इंग्लिश डिस्कशन स्ट्रीम एंड वी हैव बंगाली कमेंट्स एज यूजुअल, सो लेट्स ट्रांसलेट इट फर्स्ट, देन we'll explain it. तो today, according to Rising Spirit, that today Shubhendu going to Shatabdi, the Trinamool MLA, her house, and all the MPs meeting with Shubhendu at her place in the evening. In the first half, they met at Bhupendra Yadav's place. He's saying that among common people, there has been a loss of trust on Shubhendu because of this. Rising Spirit, I absolutely disagree with you. I believe there is no such common people. The common people you are referring to are simply leftists. I do not believe any BJP supporter today is trusting Shubhendu any less, unless they are absolutely of the bhalo kaku or dumb kind themselves, and they think that they'll treat Trinamool as untouchables from here for the next 5,000 years, and that will work. No, I think rest of the BJP supporter base will be very happy with Shubhendu for doing these shenanigans and doing a controlled demolition and doing high IQ statecraft. This is pure political chess going on. This is not hullabaloo, right? Anyway, go ahead, Shayan. Controlled And demolition, Yeah. why? just And just Shubhendu also. just a small point, just a small Okay, after point. that, Shayan, come in. हाँ, एंड शुभेंदु, आई फील, ये मेरा मानना है, हो सकता है मुझसे कोई असहमति भी रखता हो। शुभेंदु अधिकारी ना ये काम हेमंत बिस्वा शर्मा से भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा Yes. शर्मा को लोग कम्युनल बोल सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी को कोई कम्युनल नहीं बोल सकता ओपन। Yeah. Not क्यों not वो yet, at कर least. नहीं रहे। Hmm. वो बहुत अच्छे से उन्होंने जो बैलेंस पकड़ा है, किसी लीडर ने नहीं पकड़ा है। हमें जो हिंदुत्व 2.0 बोलते हैं ना, हमें ऐसा ही लीडर चाहिए जो सहज रूप से तिलक धारण करे, जय श्री राम बोले, पर ऐसा ओपनली एकदम ऐसा ना दिखाए कि हम खाली हिंदू के लिए हैं। वो क्या बोलते हैं जो हिंदुत्व 1.0 में है ना कि क्या कि पहनावा भी वैसा हो जाए, और क्या बोलते हैं संस्कृत में गाने लगे खाली, ऐसा भी नहीं। एक दिखना चाहिए कि मॉडर्न आदमी है, मतलब संस्कृत भी मॉडर्न हो सकती है, बट एक दिखना चाहिए कि और वाइब शुड बी मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड। बातचीत में एक सेक्युलर पना भी होना चाहिए आपके व्यवहार में, वो बहुत अच्छे से मेंटेन किया। Yeah, go ahead, Shayan. I guess मेरे ख्याल से तो शुभेंदु अधिकारी would be finally the chief minister or the up and coming big leader. Already is a big leader who would bring this thing into the mainstream discussion that state secular हो सकता है, इंसान secular नहीं हो सकते, and as long as the state is not overwhelmingly favoring any particular religious section through state sponsored schemes and stuff, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है. So he would be the first one to normalize that entire idea, जहाँ पे अपना पर्सनल कुछ भी करने के लिए किसी को गाली खाना ना पड़े. There have been people, there have been chief ministers who has actually done it on the ground, but उसको एक intellectual mainstream discussion के format में लाने के लिए जो push मिलेगा, that would come from Mr. Shubhendu Adhikari eventually. Secondly, there is another very important thing. If you have actually caught on all the speeches by the chief minister, he has been constantly saying this thing कि पिछले 50 सालों से जो हुआ, he has not been mentioning 15 सालों से जो हुआ. Multiple times he has said this, पिछले 50 सालों से हुआ, which basically means that he is trying to establish the thing that TMC is nothing but an extension of the incompetence and the hypocrisy of the left. And he is also proclaiming, and with whatever happened last night, I guess it's a very glaring proclamation कि अब आओ हम देख लेंगे. And by doing so, he's basically, and every time he says so, he's basically trying to make people reminiscent a memory which is not very old actually. Because you see, I guess after a span of 3-4 years, once again people would feel let's say sympathetic towards the left. But since the bad things have been happening in continuation, sorry, yeah,
since the bad things have been happening in continuation, the memory or the perception of this memory is still very fresh that एक ही तरह की चीजें हो रही है, लेफ्ट जो कर रही थी ममता जी ने भी वही की. That idea is very I mean novel till now. So वो एक है. Yes. दूसरी बात ये है कि absolutely, I mean they received no coverage at all. So the only kind of coverage I felt I received was from my WhatsApp statuses of my contacts who eventually are in Jadavpur. That is the only thing, and there too they maintained it very clearly that no hawkers have been actually attacked or anything. So it's only the people who came forward to support them got something happened in crossfire. And also there's this other thing कि वो constantly ना आप लोगों की तरफ नरेटिव फेक भी रहे. आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर शुभेंदु अधिकारी कि लोगों को कुछ ना कुछ ऑफर करते रहे जिसमें वो अपना दिमाग खपाए, एक्चुअली उसके बारे में सोचे. So whenever he is essentially doing something, it is not reactionary. He has already served you in his golden plated the narrative. Now you play along with it, try to accommodate yourself in that narrative, try to get accustomed to this new normal. Meanwhile, he does all these things. And there's a fine balance even in terms of his political actions. Every single person who had basically become the face of corruption, उनके साथ कोई compromise नहीं हो रहा. उनके ऊपर धड़ाधड़ action लिए जा रहे हैं. And at the backdrop of that, other things are happening where he's trying to assimilate, and it has to be controlled. I honestly believe at this point it has to be controlled. One can say कि इसको organically क्यों नहीं छोड़ा जा रहा भाई, simply because that is the exact thing that probably Mr. Buddhadeb Bhattacharya had done, कि इसको आप ऑर्गेनिकली छोड़ के अच्छा बन सकते हैं, फिर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की जो धज्जियां उड़ेंगी और आपके इन्वेस्टमेंट का जो वो स्ट्रीम चला जाएगा, डिलेड हो जाएगा, दैट would basically take you to a different trajectory, because you know that thing goes on. आज कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको आप जस्टिफाई करने जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपका जो काम आप कर रहे हैं उससे ध्यान भटक जाएगा लोगों का और उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता रहेगा कि क्या हुआ, इसके रिएक्शन में क्या हुआ. He never let any of that happen. He was very clear, मैं आपको चीजें ऑफर करते रहूंगा टाइम टू टाइम. In fact, he has been repeatedly saying these things. ना कि initially I guess one or two times he said जय श्री राम मत बोलिए क्योंकि मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, मैं सबके लिए काम करूंगा. Yesterday also he basically said कि अब तो देखिए मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो काफी सारी चीजें मैं नहीं कह सकता, पर हवा बदल रही है ना. And हवा बदल रही है ना is basically a very 100 days. मौसम 100 days. बदल रहा है. मौसम बदल रहा है. मौसम बदल रहा है. 100 days work also is restarting. Today it was announced. 100 दिনের কাজ. Yeah. So somebody is getting So that was something there. out of this government anyway. No, वो जो And अभी स्पीच दिया ना also- शुभेंदु अधिकारी. हाँ बोले लीजिए पहले. Simply, if you look at what they did with these freebies, the entire form thing, that was very clever. ये basically he was saying कि देखो तुम हमसे ही चीजें लोगे भी और हम हमारे ऊपर भी भड़क जाओगे, ये तो नहीं होगा. So basically it demolishes the entire idea of कागज नहीं दिखाएंगे. He basically hammered it down कि दिखाना तो पड़ेगा, दिखाएंगे तो मिलेगा, नहीं डबल तो दिखाना पड़ेगा. डबल double दिखाना ट्रिपल पड़ेगा. 12 गुना You दिखाना have your पड़ेगा तुमको entire कागज. records, and probably that would eventually also help you monitor a lot of stuff and such things, because I mean simply there were so many beneficiaries who were probably male and getting Konnashri and stuff or getting Lukkhi Bhandar and stuff. So that was a way to siphon of money, na? That was a way to institutionalize the entire concept of कहाँ से पैसा आएगा, यहाँ से आएगा, और उसका कोई हिसाब भी नहीं दिखाना पड़ेगा क्योंकि हिसाब तो ऑलरेडी स्टेट के खर्चों में मैनेज हो गया. So that thing would also be exposed. तो हर जगह से तो हुआ और फिर नई नई चीजें देना. इट वाज वेरी हिलेरियस. बकरीद के दिन जहाँ पे आप इस्कॉन पे वो माथा वाठा टेक रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं, and no one can say a thing, which is another thing. No one has been able to say a thing as well, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो कर दिया उसके मतलब एक्सचेंज में काफी सारी चीजें लेफ्ट को पॉइंट आउट करनी चाहिए थी टीएमसी को. दे कुड नॉट. They specifically could not, because he has never left any loose end which can be capitalized against him in terms of what a state is supposed to, and compared to that what an individual can do in his personal life. So I have full faith in him that he is the person finally who will bring that entire discussion to the mainstream, and in fact he'll spearhead the discussion from a political front. And if you look at my conspiracy theories, he might be one of the very first people who actually
becomes the face of the Hindutva 2.0 front or the BJP 2.0 front, which eventually might separate from the एक्चुअली older. मैं और एक बात बताता हूँ, जब 2024 में वो 240 सीट आई थी, तो सबसे पहले ये बात कहने वाले कि सबका साथ सबका विकास नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, बंद जिसका करो, जो हमारे साथ जो उनका हमारे विकास। साथ, हाँ, जो साथ हमारे हम साथ हम उसके साथ, ये बात कहने वाले भी शुभेंदु अधिकारी थे, Yeah. Now ठीक है। on this centralizing power issue, or this control demolition issue, obviously Shubhendu is that kind of a person himself, and he is on the same page with Amit Shah on this. But if he actually wasn't, Amit Shah would not allow anybody to not do control demolition. Amit Shah knows that we can't experiment with a potential Buddhadev Bhattacharya like figure anymore. We can't afford that anymore. The insanity that has happened for the last 15 years, that can't be handled again. So yes, both of them are going to do this. And if Shubhendu had actually been a kind of person to stray away from this path, Amit Shah would tell him that yes, fuck off, bro. Sanjeev Sanyal is the CM from tomorrow. Then, if you don't want those things to happen, yeah, please be on my side. But he's that kind of a person anyway. So now we are in the last leg of this live stream. We will take live chat questions now. Abhay and Shrayan, you all keep an eye on the live chat and take whichever questions you all want to take. Or if you have something to add to the questions I'm taking, feel free to do that as well. Okay. I'll just take this question first. एक मिनट, बहुत सारे बढ़िया भी क्वेश्चंस आ रहे हैं. One moment. Yeah, firstly, yes, will Kolkata Metro see a huge expansion? I think it will, yes, absolutely. Secondly, yeah, is Shubhendu the next BC Roy? I think he is. He'll be actually more effective and successful than BC Roy. Wait, where did the significant questions go? Dada, can you point out that native Bahiragoto disagrees Shubhendu is going to be more hardcore than Himanta? Yeah, you take it up. You take it up on your point. I'll answer one particular question I was wondering about. Yeah, someone was saying, why don't we curb groups like SFI in campuses, etc. Now, because of the age-old reason that there is something called precedence, and if you curb somebody in some way, because curbing here will mean very illegal things. If you are targeting just SFI, because how else would you curb SFI and not ABVP? With work, because the person recommended workload. With workload, even ABVP gets affected. If you are saying that, yes, in order to end student politics completely, therefore shove more workload up their asses, then yeah, that's at least an argument. But curbing only SFI won't achieve you anything. And remember, your enemies are there in the country, all around the country and all around the globe. So don't again start imagining that you can get away with anything and everything. Okay. Yeah, Abhay, go ahead. Yeah. तो नेटिव बहिरागो तो कह रहे हैं कि मैं आपसे असहमत हूँ, शुभेंदु अधिकारी और भी कठोर होंगे हेमंता से, तो पहले उनको शक्ति संगठित करने दो, वो अपने शक्ति को पूरे राज्य में संगठित कर रहे हैं। तो मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि आपको मुझसे असहमत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, आई एग्री विथ यू। पर मैं बस ये कह रहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा खुलकर ओपनली बोल देते, शुभेंदु अधिकारी उसको और भी चालाकी से मैनेज कर रहे, भीतर में वो और कठोर है, पर ऊपर में जिस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करना, अपने नैरेटिव को प्रस्तुत करना, उसमें फिनेस ज्यादा है शुभेंदु अधिकारी में, जितना मुझे अभी तक दिखा। आप देखिए, वो सभा में गए थे, कोई सरकारी सभा में गए थे, ठीक है, वहां पर उन्होंने पूरा भाषण दिया और अंत में जोड़ दिया गौ माता की जय। कुछ नहीं, मतलब एकदम सटली उस बात को सामान्य बना दिया, बिना खुल के बोले कि गाय माता की तो हम सेवा करने वाले लोग हैं, हमारी संस्कृति में तो गौ माता की सेवा की जाती है, कोई खुल के बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले अभी तो खाली जो नियम बना था पश्चिम बंगाल में गौ हत्या को लेकर के, वही लागू किया है कि 14 वर्ष से कम आयु की गाय की हत्या नहीं कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है 2-3 वर्ष में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देंगे। वो धीरे धीरे वो ले जा रहे बात को एक झटके में। Abhay, if you ask meat lovers already, the ban on killing any cow that's younger than 14 is practically a beef ban,
because it's हाँ not as tasty if you eat an animal that's older than 14 years. So they're not going to eat that bad tasting old animal anyway. It's banned practically. But that's जो भी for not मतलब for एक boss होता India. है ना कि आप मैसेज दे देते कि हमारे देश Yeah. में हमारे स्टेट में आप गौ हत्या नहीं कर सकते, ये हमारे कल्चर के Hmm. विरुद्ध है। वो एक Hmm. मैसेज देने के लिए भी आप पूर्ण प्रतिबंध लगा देते हैं। तो अभी Hmm. आरंभ किया, आप देखें मुस्लिम लोग भी खुलकर विरोध नहीं कर पाए इसका। वो बोल Hmm. रहे थे गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो, इतना ही है। थोड़ा हिंदू मौकड़ी लोग किए हैं, गाय कुछ सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन कर नहीं पाए. विरोध नहीं कर पाए। वो Hmm. उल्टा बोल रहे थे तुम लोग राष्ट्रीय पशु बनाओ ना गाय को, हम लोग तैयार है, हम लोग नहीं खाएंगे गाय। Hmm. मतलब Hmm. नैरेटिव बैटल हार गए एक झटके में, Hmm. Hmm. कि आपने हार स्वीकार कर ली उस बात पर। और मुझे हाँ, इस लगता है बात. ये एक तर्क बहुत काम किया है कि जब ये ये मैंने अपने स्तर पर कुछ कुछ किया, दूसरे लोगों ने भी किया होगा, कि मैंने जब ये बोलना शुरू किया कि कुत्तों को लेकर तो आप लोग सड़क पर आ जाते हैं, कुत्ते को Hmm. कोई छुएगा नहीं, पर गौ हत्या का Hmm. विरोध करने से आपको बहुत मिर्ची लगती है कि हमको खाना है, हमको तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों भाई, Hmm. ये कैसा दोगलापन है? कुत्ते से प्रेम करना, कुत्ते को अपना बच्चा मानना वो सब ठीक है, पर गाय को अपनी माँ Hmm. मानना अंधविश्वास है, ये कौन सी बात है? तो Hmm. बहुत लोगों का मुंह बंद हुआ इस पर, मुझे लगता है, Hmm. स्पेशली लिबरल माइंडेड लोगों को। वो बोल रहे ठीक है Yes. तुम लोग, वो बोल रहे कि भाई तुम कुत्ते प्रेमियों का मन क्यों आहत करो ये बोलकर कि गौ हत्या यदि अलाउड है तो फिर कुकुर हत्या भी अलाउ करो। Hmm. तुम गौ हत्या बंद कर दो चलेगा, पर कुकुर के बारे में कुछ मत बोलो। ये एक Hmm. मैंने देखा है, थोड़ा डिफेंसिव हो गए जब से ये Yes. तर्क देना आरंभ किया। Hmm. Yeah, go ahead, Sharon. Yeah, regarding that question that you addressed, Dada, should student organizations be curbed and stuff? I guess that would eventually the scrutiny and the, let's say, balancing would come from other student organizations as well. Recently, only I was reading that probably the ABVP got some kind of high court order against the SFI and similar other communist student bodies that you cannot collect money like that in name of chanda to support their cause. So basically, if you're cutting off the only source of, resources that they have to collect, now they're, supporting political parties are out of power for so long. Eventually, the fact that this could be done right now and that the High Court has sanctioned it would, significantly change the way that these institutions are viewed by the other students. कि एक बार एक प्रेसिडेंट यहाँ भी सेट हो गया कि उनके कुछ काम को खारिज कर दिया गया, the High Court did it. Then that has a down order effect as well. ये अब trickle down होगा और बाकी चीज़ों में भी अपोज करेंगे. And now obviously there is a mass ना जो कि basically fence sitter है, जो कि जिनको कुछ आता जाता है नहीं, एंड दे प्रोबेबली हैड ओपिनियंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द आयल, एंड उनको ये था कि वो कब मैं बता पाऊंगा, अभी बता पाऊंगा, अभी कौन सा वाला ओपिनियन रखने में ज़्यादा फायदा है, तो स्टेट में ये पावर में है तो वही रखते हैं. एंड इवेंचुअली दैट इज हाउ, लेट्स से इवन आई फॉर दैट मैटर हैव कम टू सो द पोजिशन वेयर आई एम टुडे, बिकॉज वो एक झटके में नहीं हुआ था, वो ग्रेजुअली ही हुआ था, वेयर वी इंटरेक्टेड विद सेवरल पीपल एंड देन देयर वर सेवरल चेंजेस. और एक भी चीज़ होती है ना कि जब कोई पार्ट परपेचुअली बहुत देर के लिए रहता है, आफ्टर सम पॉइंट यू गेट टायर्ड ऑफ बीइंग आउट ऑफ द सिस्टम. ये सच बात है. फॉर मोस्ट नॉर्मल पीपल हु डू नॉट रीड पॉलिसीज एंड ऑल दैट स्टफ, उनका ये है कि ठीक है जो है उनके फेवर में बात करने से एक मेन स्ट्रीम में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको कितना ही फर्क पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे. तो दे विल कम टू दिस साइड. एंड मुझे लगता है कि द बैकिंग दैट दीज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर प्रो इंडिक इन देयर वर्ल्ड व्यू लाइक एबीवीपी एंड एनएसएफ, दैट दे वुड गेट इज कि उनके साथ कुछ हंगामा बवाल फिजिकल वायलेंस नहीं हो सकता. वो स्टेट प्रोवाइड करेगी सिक्योरिटी कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ तो उठा के फिर हम आपकी गांठ तोड़ेंगे, जो भी ये करेगा, which is very similar to what has been happening with the CJP protests as well. कि अमित शाह basically gave the permission कि जो करना है करो, and will monitor the entire place very strictly. कुछ भी वायलेंस इंसाइट करने की अगर कोशिश की, फिर तो तुम्हारे पास कोई डिफेंस है नहीं, फिर जो हम करेंगे वो तो तुम देखोगे, which is very similar to what happened. इसीलिए probably they are not being able to say, the CPIM has not been able to come up with some significant defense for what happened last night, क्योंकि वायलेंस इंसाइट किया किसने? हमने तो लोगों पे नहीं किया जो कर रहे थे, हमने तो उनको करने दिया. फिर तुम भड़काओगे तो हम इस पोजीशन में है कि हम तुम्हारे साथ कुछ कर सकें. Yeah, and the Jadavpur MLA had prevented it at first, and then she, I guess, was brought in line, or
she also wanted this to happen this sneaky way in the middle of the night, and she did not want a hullabaloo in the That middle of the basically day. everyone is doing ये ना कि नहीं नहीं हम तो तुमको बचाएंगे, फिर अगर हाँ, किसी ने अंडा मार इसमें दिया तो क्या कर सकते हैं? हम्म, इसमें ना जो स्ट्रेटेजिक तरीका है ना, इसमें पूरा अमित शाह का छाप दिखता है। हम्म, ये वो क्या कोमल होके पीछे हट जाने वाला हिसाब नहीं है जो पहले शाहीन बाग में हो गया या हम्म, ये किसान आंदोलन में हो गया। इसमें पूरा लगता है अब अमित शाह कंट्रोल ले रहे हैं, या अमित शाह को बोला गया कि भाई आप संभालो भाई, हम्म। अब आपको छूट दे रहे हैं। खासकर कौमियों बंगाल से में मुझे लगता है पूरा अमित शाह को छूट दे दिया गया है कि आप ऊपर से बंगाल देखिए, और बंगाल हम्म, में शुभेंदु अधिकारी तो है ही, वो देखेंगे। हम्म, अब केंद्र कौमियों के से दृष्टि से आप देखिए अमित शाह। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है, विच इज एक्चुअली लेजिट काउंटर आर्ग्यूमेंट इन द हॉकर वर्ल्ड, इन द हॉकर कॉन्टेक्स्ट। पहली बात तो ये है कि फुल कुडोस टू बीजेपी फॉर डूइंग द एविक्शन ड्राइव इन जादवपुर, बिकॉज आई थॉट आफ्टर द जादवपुर एमएलए बैक्ड आउट, आई थॉट ओके, now starts the game of backing out from everything for the next 15 years, and then saying system unka hai, and then regretting the fact that he could not become PM. I guess it's starting now, but no, that's not happening. The eviction is done in Jadavpur. But a lot of commies are asking sarcastically that, oh, will you have the balls to do it in Dharmatala Esplanade? What do you all think of that? When is it happening, or if at all, in Dharmatala and many other places as well? Do you think it will happen in Dharmatala? Yes, I do think It so. will. I have Because faith in Shubhendu because Adhikari. when they do it, it would not be something exclusive. वो सब जगह पे Yeah. कर रहे हैं, यहाँ पे भी करेंगे. And now if you protest against it, Hmm. it will only go against you in terms of narrative कि सब जगह जब हो ही रहा है तो यहीं पे ये ऐसा क्यों हुआ कि violent क्यों हुई ऐसा कुछ. And that would give them more leverage to actually take certain other kinds of actions in terms of security, जो कि पहले ऐसे ही Yeah. नहीं कर सकते थे, because it would be portrayed as कि ये तो कुछ ज्यादा लाइन क्रॉस कर रहे हैं, सबके पीछे ऐसे जाना इज नॉट राइट. तो वो करे Yeah. कुछ 10% करे, फिर वो 50% करेंगे. Remember, the central अब forces will be देखिए here for 2 months. So all the significant things that can attract violence have to be done by 4th July, US Independence Day. We have to do it और before 4th of July. Our freedom has to और come अब before 4th of July. और आप देखिए ना, जैसे जादवपुर जैसा एरिया जो है, या दमदम में जो किया था, ये सब हिंदू इलाकों में किया, ठीक है। अब धर्मतला में करेंगे और वहां पर कोई विशेष बवाल करेगा, तो वापस से नैरेटिव बन जाएगा कि कब ये लोग कौन अलग विलक्षण लोग हैं जो इनके प्रति विपक्षी दलों में इतना पीड़ित है, इतना प्रेम है, इतने इतना क्या बोल सकते हैं सहानुभूति है, तो वो नैरेटिव भी बन जाएगा। तो ये लोग यहाँ से खेले या वहां से खेले, फंसना तो है ही। तो पूरा प्लानिंग करके किया जा रहा है, जो किया जा रहा है कि कब कहाँ क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, और कब जैसे न्यूज़ को भी कंट्रोल करके रख लिया है एक प्रकार से। अब देखिए ना, जो अगर आप एबीपी को भी देखें, जो कि बहुत ही लेफ्ट विंग है, जनरली बहुत लेफ्ट और लिबरल टाइप, वो भी विरोध नहीं कर रही है सरकार का ज्यादा कि अरे हॉकर को भगा दिया इन्होंने, गरीब लोगों को कुछ भी हटा नहीं, दिया। एक विरोधिता नहीं हुआ है बीजेपी वालों का, एक विरोधिता नहीं हुआ है एक न्यूज चैनल से 1 महीने में। सब कोई संगी मुझे बन गया है, लगता सब है कोई गोदी मीडिया बन के बैठा है। Yeah, and the thing is मुझे many लगता people है can actually शुभेंदु call it अधिकारी Godi ने media. पीछे से चाबी दे दिया है उनको कि तुम लोग No, no, it's not even ज्यादा about चाबी. बकलोली मत करो, अगर अभी आप बकलोली मत इनको करो, नहीं गोदी तो हम तुम मीडिया लोग बोलेंगे, the next thing that would happen is Shubhendu Adhikari will be himself giving you an interview in a proper formal press conference the next day. वहाँ पे आपने जो भी narrative चलाया उसके कंबल कुटाई होने वाली है. So that would be the new normal, I guess, because you see that the number of press conferences has been insane. तो वो communication gap तो रहा नहीं कि कुछ भी कहीं पे होगा, it would only be incentivized कि उसके लिए सवाल पूछा जाए, and he would come up with this cool impromptu interviews. Because the other thing is, I guess a lot of people had actually after 2021 it was a very common perception कि भाई अब तो कोई female candidate लाओ against Mamata Banerjee, and that is the way you go about it. Probably they were the very first people who realized कि ना, the entire thing that we have a problem, it is some sort of toxic hyper masculinity.
even though women might be doing it. So to counter that, you have to bring a good sort of protective hypermasculinity as well. So, and nobody absolutely has a problem that some woman was not made a CM for the show, because the kind of things that Mr. Adhikari has been doing, people have been loving it. And the other thing being that ये जो template अभी set हो गया कि state के लिए जो अच्छा है वो किया जा रहा है irrespective of religion. He has been reiterating it. And कुछ धर्मतला में अगर हुआ, धर्मतला যদি কিছু হয়, how do you actually prove it कि this is something out of line from what has already been happening? So I guess even that was thought out. And even if you say nationally, I guess some of you must have seen that thing that has been going in rounds. Some account, I don't know who it was, might be anonymous or it has been forwarded several times, asked the Muslim community specifically to not take part in the CJP protest because you'll be made cannon fodder. That was brilliant. That was And- so accurate, yes. though. That was some masterstroke Yes. from that account. I don't know if And Muslims did I not go guess- just for that account, but it was a beautiful thing to point out. Yes, and I guess that discussion would be brought into Bengal very soon, because यही बताया जाएगा कि देखिए आप जो कह रहे हैं कि धार्मिक प्रताड़ना हो रही है आपकी, वो तो नहीं हो रही, कहाँ पे हो रही है? ये तो आपके धर्म के हाँ. नहीं है, इनके साथ हुआ, आपके साथ भी हो रहा है. तो इट इज नथिंग Yes. टू डू विथ योर रिलीजन. ये बार बार लोग दर्शाते रहते हैं. बेवकूफ बनाना खुद को बंद कीजिए, दूसरों को भी Yeah, बंद bro. कीजिए. I don't know if you all know this, but in reality, on the ground, Shubhendu actually has a great relationship with Muslims, even more than Yes. Mamta actually. Yes. So if at all he actually needs to handle things in the Islam versus Hindu way, he will not handle it in front of her eyes, obviously, because he's not a dumb fuck. He will handle it somewhere else. Because I don't know why you all are so positive about the evictions happening in Dharmatala. I don't know if it will. I don't think. I'm skeptical about it. But even if it happens, there the only problem is that there will be a lot of Muslim resistance as well. And Muslim resistance, we know, is the street veto in India. And who has demolished the street veto after like hours after coming to power already? It's Shubhendu himself. So he knows from which reasons how many Muslims will come to protest if we do a demolition drive right now. And that's what he's preparing for. He's actually prepared for it. And I think many Muslims in many levels are in tandem with him, cooperating with him. They will be the ones feeding him the information that, yeah, see, this gang from here is going to do the protests, and you all can handle them there, etc. Yeah, go ahead, Abhay. 2-3 घटनाएं पहले ही हो चुकी है. देखिए, पाक सर्कस में बहुत पेला सबको, फिर 40-50 लोगों को उठाया. आप जो बोल रहे थे ना, वो रिक्रिएट कर रहे थे पुलिस वाले सीन और ये सब, मतलब कोई किसी का मुंह से चू नहीं निकला. फिर एक आसनसोल में एक घटना हुई थी कि कुछ उनका अवैध अतिक्रमण हटाया था और पुलिस थाने में पत्थर चला दिए थे. फिर अगले दिन जो उठाया है, मैंने ये न्यूज़ सुना भी नहीं है. इतना इनसिग्निफिकेंट है. ठीक है. जब आप समझ जाइए कोई समुदाय, मतलब मुस्लिम समुदाय कैसे लाइन पर आ रहा है, आपको यदि ये समझना है ना, तब आप उनके मुल्ला मौलवी को बोलते हुए सुनिए. वो यदि बोल रहे थे कि ईद में गाय मत काटो, तुम लोग गौ हत्या मत करो, ये कुरान में नहीं लिखा हुआ है, आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं से तो चाबी मारा जा रहा है. हाँ, जब इस बार ईद में तो मुल्ला मौलवी बोलने लगे तब रिकॉर्ड कम संख्या में उनका हलाल बलि, क्या बोलते हैं उनको, सैक्रिफाइस, व्हाटएवर, मर्डर हुआ है, कुर्बानी. या random taxi driver starts up a discussion with me who's actually not very happy with BJP because of the hawker demolition drives. He says that after all, one thing I'm really happy with Shubhendu is that there was not much kurbani on the streets on the day of Eid, and I really find that disgusting, all the blood flowing down the streets. And you know what happened last year? He was talking about what happens every year in some parts of the world or the other, that there were some huge rains and there was Eid on the same day, and the road flows with it's a river of blood on the streets. So he was saying that I had a pickup on that day. I usually don't go out on those days because I don't like to see so many animals getting killed and hanging in front of my eyes, etc. So that day I had to go out, and I was dropping a Muslim gentleman in a Muslim neighborhood, and in his alley, the alley was entirely full with knee deep in red blood-filled water. So I asked that person politely that, sir, I really don't want to go there because that blood is of a cow, and you all know how it's important to me, us.
Therefore, please go down. And he in fact did get down from the cab and went. So this lack of kurbani has positively affected those lower income, lower middle class people who are otherwise going to be unhappy with BJP for the hawker demolition drives. And that's why I'm saying this hawker demolition drive is not going to be a significant election issue in 2031 at all. It cannot be. It has, first of all, it has never happened. Second of all, just because something has never happened before, it cannot happen. I'm not that kind of a person. I do not argue those things. But I'm saying their loss will be made up for in many other ways. People will forget about it by the time 2031 comes in. Yeah, go ahead if you all have something to add. Otherwise, I'll take up another different question. Yeah. And I honestly believe that this is finally the time, the leverage so far in our political scenario has been ghettoization, which is the non-urban leverage. जैसे जैसे यहाँ पे इकोनॉमी की हालत ठीक होगी and they see other communities or urban regions getting jobs and moving on in life, ऑटोमेटिकली इनको भी ये लगेगा कि क्या ये सब तो कर रहे हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, छोड़ के एक सही डायरेक्शन में जा सकते हैं. So that scenario would already be supported by the kind of development that would be unfolding in a very short time, I believe. उसके बाद it will be normal. And by the way, and one more yeah, go ahead. point. Shubhendu Adhikari, though, is not from Kolkata, he's from village, okay, Kanti, Mednipur. But his thinking is very urban. Industrialization, development, clearing the roads. ये है बहुत urban thinking, urban centric. That's not his thinking. After all, he is a very ambitious political guy. अमित शाह से डायरेक्टिव मिला है, अब ये करना है, and he knows, yeah, ऐसे ही करना है. I know what to do. ठीक है, जो भी कर रहे हैं, अमित शाह कर रहे हो, जो भी कर रहे हैं, ये गवर्नेंस पूरा अर्बन गवर्नेंस है कि हमको अर्बनाइज करना है, मतलब सिस्टम्स अर्बन बनाना. Yes. So, now we will take up 2 more questions to discuss amongst us 3. One by Skanda here and one by Rishabh here. Both are very important. So I'll give my thoughts first and you all gather up your thoughts on these 2 topics, okay? Rishabh is pointing out the possibility of Congress becoming more and more significant. So yes, Congress and CPIM are going to be the 2 biggest dogs after BJP, obviously, but very small puppies compared to BJP. But yes, I do see a bright hope for Congress here. So Rishabh is asking, could you take up my thoughts on INC and the division of the opposition? Would like to hear your thoughts. CPIM without Soviet backing will have a tough time fighting against BJP. CPIM won't need Soviet backing. They will have the woke backing of the entire world, which also Congress will have. So in the end, those 2 guys are going to be given 100 rupees and they are going to be told, yeah, share among yourselves, kids, and go fuck BJP. So yes, Congress is going to increase its numbers. The other thing that Skanda is pointing out, asking is more controversial opinion on student elections. As far as utility goes, I don't see any. Student politics is obviously a great feeder for future politicians or political parties, etc. I see. Most people hate student politics because of how leftists run it, or anybody in India runs it. Everyone's in the end a socialist. You can do student politics in many other ways, like campus Republicans and campus Democrats do not do these shenanigans that happens in our campuses. But if you hate or if you want to ban student politics just for the stuff that happens in India, Pakistan, Bangladesh, I don't think that's a strong enough reason. But my problem is that I don't see an upside to student politics. I don't see its point. Like even the phenomenon of campus Republicans and campus Democrats, would it really be bad for the country if you are a Republican and Democrat at heart in your campus and never talked about it? Or I guess some messaging in the campus is important as well. That no, see, we as Democrats have this stance on this national issue or this state issue or this university issue, and we as Republicans have this stance. So for that reason only, campus politics maybe has some points, some pros, but as it stands in India right now, I don't see a single upside. Now, Abhay or Shravan, whoever wants to go first, go ahead with the campus politics question as well as Congress. I, on the contrary,
to you, brother. I would disagree. I actually feel the Congress, I mean, it's not gonna be going well with them. তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে now even when the CPM has lost even in Kerala, at some point it will strike them कि এখানেও যদি আমরা একটা alliance, if we go in an alliance with Congress over here and keep doing things for long, उनका कोई वजूद वैसा रहेगा नहीं. So probably at some point they are going to ghost the Congress, because if you look at the voter base of Congress, they are people who can pretty much kind of shift to the CPI. So it is something very similar to what BJP has been doing in the tougher states, where they want to go alone after some time, gradually, and they want to ghost their allies, and they'll be like, "Hum hi vikalp hai." So I think sooner or later the CPI would actually pick up on that, because they have managed their finances well. They still have their networks, and any issue that comes up in West Bengal, which would be kind of anti-BJP, would be exactly very pro-CPI. And with the kind of things that all the India Alliance leaders have been saying about Rahul Gandhi, I guess somewhere, I don't know, they put up posters of what the India Alliance leaders have said about Rahul Gandhi, all the horrible things. Where in Kerala, the chief minister said bizarre kind of things about them. And in Bengal too, I guess that trend would follow. Because kitna hi khichenge isko, ye kuch offer to kar nahi rahe. Or they're not offering anything which is mutually exclusive that the CPI cannot acquire on their own part. So उनको एक टाइम पे साइडलाइन कर दिया जाएगा, and it would be a direct CPI versus BJP thing. And the BJP too is now kind of what I feel actually said, bring it on, कि लाओ अभी हमारा चीजें settled है. So now is the time when we actually get starting that confrontation. Because if we do it right before the elections, or let's say 2-3 years down the line, then you would be an unknown enemy. Let me from now only try to get to know what are the shenanigans you're going to pull up, और उसके थोड़े थोड़े करके काउंटर्स लाते जाते हैं. Probably do both of y'all believe that BJP right now is in a better spot nationally than it was in 2024? Yes, but it also is closer to a divide, I feel. It's closer to an anti-incumbency as well because of NEET paper leaks. Anyway, Abhay, go ahead. जैसे देखिए बीजेपी बेटर स्पॉट में भी है, पर मुझे लगता है बीजेपी के भीतर भी दो फाड़ हुआ. वो दिख रहा है कि आप जैसे कुछ राज्यों को देख लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह, और वही आप यूपी और बंगाल और असम को देखिए, तो इनके शासन करने के ढंग में, विचारधारा में अंतर दिखता है. खैर, यदि कांग्रेस की बात करें, देखिए बंगाल में कांग्रेस का अस्तित्व कुछ है नहीं. जैसे कि श्रोयन बोल रहे थे, बात यह है कि कांग्रेस दे के भी क्या देगा, उसका विचारधारा भी कौन सा वामपंथियों से बहुत अलग है. क्या है मतलब कांग्रेस में ऐसा क्या है कि हम उनको चुनेगा या कोई भी उसको चुनेगा. तो यही बात है. और अब देखिए, अब वामपंथियों में, बंगाल में वामपंथियों ने एक अच्छा काम किया है कि उन्होंने एक नई खेप तैयार कर दी है युवक युवतियों की, युवा नेताओं की. जैसे शतरूप घोष है, या एक आफरीन करके एक लड़की है, और एक मीनाक्षी क्या मुखोपाध्याय है. तो ये लोग की खेप तैयार कर दी है. कांग्रेस में कौन है बंगाल में? कोई तो नहीं है. आपको यदि किसी दल को ये भी देखना है ना कि कौन सा दल आगे जाकर के प्रभाव डाल सकता है, तो आपको इसका गैप अब है. नेतृत्व भी देखना. तृणमूल के जो भालो काकू यंग जनरेशन है, इन देयर mid-20s, दे कैन टेक दैट प्लेस अप इन कांग्रेस. शाइनी कैन. पर वो कांग्रेस में क्यों जाएगी? और बात यह है कि कांग्रेस को यहाँ पर लोग क्योंकि कितना तृणमूल समझते रहेगी हैं. नहीं. अगर तृणमूल नहीं रहती है, या फिर ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि और अब हमको पता है कि तृणमूल नहीं रहेगी डेफिनेटली, देन दे विल गो टू कांग्रेस इमीडिएटली. तो वामपंथी दल में क्यों नहीं चले जाएंगे? कांग्रेस में क्यों जाएंगे? Because Trinamool Bhalokakus are not, can't go to CPIM because they have those memories in their families when their fathers and mothers used to get beaten up for opposing the CPIM. Therefore, they won't go to CPIM. You know, which is partly why I think कि इतने लोगों को actually sooner or later BJP में लाया जाएगा, and they will come up with their support base कि देखो ये इतने बुरे लोग हैं नहीं, वैसे इनकी विचारधारा हमसे थोड़ी अलग है, पर ये अच्छा ही करना चाह रहे हैं. Did you see the very interesting statement that was being made by Shri Buddhadev Bhattacharya's wife? I mean, I do not make much out of it. See, probably she only said it at face value, but she actually said कि अगर लोगों का काम कर रहे हैं वो, और राइट विंगर भी है, तो भी अच्छा बात है, क्या दिक्कत है.
अरे This बुद्धदेव was when भट्टाचार्य खुद राइट विंगर थे। तो no, I get राइट that, but most विंगर का people विरोध क्या still करेंगे? want to make him of this right-wing genius. ना economically they don't understand. उनका सिर्फ culture तक ही उनकी बुद्धि चलती है. Actually, most people do not have any idea of the economic left or right or awareness as such. उनके लिए left or right की नहीं, जब बात होती है, ये वही है कि कुछ लोग मतलब अद्भुत आइडियाज ला रहे हैं लेफ्ट विंग वाले छात्र जैसे, और कुछ बुद्धदेव लोग राइट विंगर है नेशनलिस्ट हिंदुत्व वाले, उनको उतना ही समझ पड़ता है. So if our ex chief minister's wife is saying that, eventually a lot of people would actually pick on such statements and feel like कि दिक्कत क्या है बीजेपी से. Yeah, these things work as a gateway drug, because Yeah. what you would expect Buddhadev Bhattacharya's wife to say is that yeah, default Sanghi Hindutva fascist. If she even is considering that, yes, Shubhendu might end up, because when you say these things, you are admitting that yeah, there's a possibility that he'll do good things. Then the entire commie let's say structure of argument breaks down completely, because then you are actually considering that a fascist might not be a fascist and do good things. How can you entertain that possibility? That is a huge gateway drug. जैसे जैसे Yeah, go ये ahead, Abhay. वैसी ही बात है ना कि आप को यदि कहलाना है कि आप मुर्तद हैं, तो आप केवल इसीलिए मुर्तद नहीं कहलाएंगे कि आप ये कह दें कि अल्लाह नहीं है। यदि आपने संदेह भी प्रकट कर दिया तो भी आप दोषी है। तो वैसा ही कुछ है कि आपने ये संदेह भी प्रकट कर दिया कि एक भाजपा के Yeah. मुख्यमंत्री कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो भी Yes. आपको जैसे पार्टी निकाला कर दिया जाएगा। पर देखिए, जहां तक बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात है ना, कि वो केवल आर्थिक रूप से दक्षिणपंथी नहीं थे, वो राष्ट्रवादी थे। वो भारत के हित की बात करते थे। उनका मतलब हाँ. साक्षात्कार है कि हम भारत के हित में योगदान देना चाहते हैं। और दूसरी बात है, जो कांग्रेस को लेकर बात हो रही थी कि विदेशों से ये आएगा या क्या आएगा। एक जन ने लिखा था कि सोवियत का पैसा तो नहीं आएगा। सोवियत का नहीं आएगा, पर वो पैसा तो आएगा। और दूसरा है कि चीन से पैसा आएगा यार। चीन से भी तो पैसा आ सकता है ना। तो वो ये दल कहीं ना कहीं बनी रहेगी, पर ये कितनी जल्दी कितनी बड़ी होती है वो देखना एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कितना शुभेंदु अधिकारी इसको नियंत्रण में रख सकते हैं, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि भाजपा ने पहले वामपंथियों को नहीं हराया। त्रिपुरा में पूरा वामपंथी सत्ता को पलट दिया भाजपा ने। ठीक है, त्रिपुरा में वामपंथी ही थे, फिर भाजपा आई। तो यदि वहां कर सकते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। Okay, closing thoughts then, Abhay and Shayan, on the campus politics issue. Go ahead, whoever wants to go first. See, मतलब I honestly feel वो campus politics और student bodies वो भी it's kind of a safety valve ना, कि कहाँ पे तुम लफंगों की तरह बखेरा खड़ा करोगे, कैंपस में ही करो, कुछ करते रहो, किसको क्या फर्क पड़ता है। इवेंचुअली कोई मेरिटोक्रेटिक अच्छा स्पीकर दिख गया जो कि अच्छा ऑरेटर होगा तो हम अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे उसको भविष्य में। तो इट्स लाइक कि बेसिकली वो भी है कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना जहाँ पे तुम कुछ चीजें कर सको, बिकॉज बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट इन यूनिवर्सिटीज ना आपके कहने और करने से कुछ होगा नहीं। द स्टैंडर्ड गो टू वे ऑफ बेसिकली आई मीन डाइग्रेसिंग एवरी प्रॉब्लम कि उसको इतना ही लंबा खींच दो कि करंट बैचेस भी पास आउट हो जाएंगे, फिर तुम्हारा क्या है लोग भूल जाएंगे, और डे टू डे बेसिस पे जो भी झगड़े वगैरह होते हैं दीज आर नॉट सो बिग। मुझे ऐसा लगता है इट ओनली हैज डाउनसाइड्स बिकॉज यू सी व्हाट हैपेंस इज most of the student bodies are eventually given the responsibility of organizing several things like fests and clubs and so, और उनका वहाँ पे significant power होता है। And what eventually boils down is that काफ़ी सारे लोग actually seclude themselves from these places simply because the people who are at the know-how of things are not actually, and they're very, what to say, bigoted towards different ideals and points of views. तो वहाँ पे बहुत बड़ा alienation होता है campus. This campus politics in this way does not happen in IITs, right? No, it doesn't. Therefore, IITs are that much more inclusive, right? IIT में campus politics they're inclusive. They're एक meritocratic kind का competition होता है कि कौन कितना क्या कर सकता है, वहाँ पे भी लोगों के अलग-अलग ideas होता है, but it's more of a competition of ideas and who gets things done in a better and more technocratic way rather than कि पॉलिटिकल लीनिंग क्या है आपकी और विचारधारा क्या है आपकी। मुझे लगता है जो आप आईआईटी की बात कर रहे हो उसमें ऐसा होता है जैसे कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी की क्षमता दिया जाता है, प्रमोशन वगैरह दिया जाता है कि ये कितना अच्छा काम कर सकता है। मुझे लगता है आईआईटी में वैसी ही पद्धति का पालन होता है, जबकि जो ह्यूमैनिटीज वाले यूनिवर्सिटी है उसमें राजनीति होती है।
कि You ये know, इस विचारधारा का है, in ये वो उस विचारधारा का है। और देखिए, मुझसे यदि व्यक्तिगत रूप से आप पूछिए तो किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी शैक्षणिक संस्थान में चर्चा शास्त्रार्थ का स्थान होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में चर्चा होना, थोड़ा बहुत संघर्ष भी होना, ये उचित है। पर बात यह है ना कि वहां पर लड़ाई मारपीट, पढ़ाई को बाधित करना, जो भी विश्वविद्यालय या विद्यापीठ का काम होता है शिक्षा देना, आप जब उसको बाधित करने लगते हैं अपनी राजनीति से, तो समस्या होती है। अब क्या सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था निकाल सकती है, विशेषतः सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में, जहाँ आप चुनाव के लिए राजनीति कर सकते हैं, पर आप जो वहाँ का शासन प्रशासन का काम चलता है, जो भी वो कॉलेज को करना है, उसमें कोई बाधा ना है, वो चलता रहे अपना। क्या आप वो रूल्स रेगुलेशन निकाल सकते हैं कि आप पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते? आप अपना जो राजनीति करना है, जो चर्चा करना है, जो वाद विवाद करना कीजिए, पर आप प्रोफेसर को या पढ़ाई को बाधित नहीं करेंगे। जो वहाँ का जो भी गतिविधि होती है, जो भी कॉलेज से संबंधित है, उसको आप बाधित नहीं कर सकते। वो वो आप करें तो वो to अच्छा है, reply क्योंकि to मैं पूर्ण रूप से राजनीति का विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि वहां पर आपके विचार विकसित होते हैं। आप जितनी चर्चा करेंगे उतने अच्छे ढंग से आपके विचार बनेंगे। Yeah. Swayan, please hold on to your thought. Do not forget it, because I'll ask sure. you something as well regarding this only. Because a lot of people keep saying that yes, ban student politics only because they are associating with the larger political parties. A lot of people do not have a problem with student politics if it happens without the influence of larger political parties. I just don't understand how it can be possible, or how it can be a reality, legally speaking, inside the campus. Let's say the university says yes, you can open a students organization here, or you have your union and stuff, but just don't call it ABVP SFI. Is that how it operates? एक बार repeat करो question टा, what is Yes. the point you're trying to? Yeah. There are a huge numbers of people who are in favor of campus politics if that campus politics happens without any influence from the mainstream political parties. I've always wondered, how is it even possible, and how is it possible, how is it kept possible in IITs? Does anybody It is who kept wants possible. to It is kept start an possible. organization, is he told that you can start an organization, but just don't call it SFI, ABVP? That's No, that way. because there is absolutely no fund crunch in IITs. In Jadavpur, for example, so many things actually get done with alumni funds. यहाँ पे लोगों को मतलब इंस्ट्रूमेंट्स खरीदना भी काफी सारे टाइम पे एलुमनाई फंड्स के बेसिस पे होता है, सरकार पैसा नहीं देती, तो वहाँ पे क्योंकि फंड क्रंच नहीं है, एंड एक्चुअली देयर थिंग्स गेट डन द वे दे शुड, तो वहाँ पे देयर इज अ ग्रेटर कंट्रोल फ्रॉम द पीपल हु आर प्रोफेसर्स एंड स्टफ, एंड देयर इज स्पेशल बॉडीज हु ऑर्गेनाइज दिस इवेंट्स. इलेक्शंस भी वैसे तरीके से होते हैं जहाँ पे यू विल बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड स्टफ, और आपकी कोर कॉम्पिटेंसी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोक्रेटिक कैपेबिलिटीज क्या है. तो जो भी वहाँ पे खरीद फरोख्त वुड बी अ रॉन्ग टर्म, मतलब खरीदने वगैरह की बात है, खर्चों की बात है, दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईआईटी इवेंचुअली डज ऑन देयर ओन पार्ट. उसको स्टूडेंट्स पे रिफ्लेक्ट नहीं करते भी है, तो इट विल वेरी कंट्रोल कि आपको ये बिल वगैरह हमें दिखाना पड़ेगा, हम आपको पैसे देंगे, फिर आप जो खरीदना है खरीदो. बट यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ एन ऑटोनॉमी ऑन द फंड्स आउट देयर, व्हिच शुडंट बी. क्यों करना है? अगर आप एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हो जो कि सबके लिए है, eventually the administration who has been operating so many things can do it with a better kind of competency as well, और फिर आउटपुट का फिनिश प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा होगा. which is why you will see कि जब भी IIT में फेस्ट भी होते हैं, the setting arrangement is so much better than other places जहाँ पे स्टैम्प पेड वगैरह हो जाते हैं. that never happens. and एक और भी ये बात है कि इतना सारा बखेरा करके when you eventually get into an IIT, there are so many things you can actually explore जो कि confrontative नहीं है. Yeah, the pool of people is different anyway. Yeah, so that's going to be always different. और देखिए, उनका मूल उद्देश्य क्या होता है? People in Jadavpur are less qualified or something. They are very qualified. But the thing is, यही है कि वो local है. Eventually, the people who come from outside to Jadavpur University is a faction of people who do not even get involved into much of the things. तो क्योंकि they have actually grown up with this entire scenario of political views रखना is normal, they do it lot more than people from IITs जो कि एक जगह से, देश के एक जगह से जाके दूसरे ही जगह पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप कर भी कितना सकते हैं. That is one. अब देखिए, Yeah, go ahead, Abhay. IIT का मूल उद्देश्य क्या है? वहाँ पे तो मूल उद्देश्य वैज्ञानिक शिक्षा है ना.
हम्म, ठीक है, प्रौद्योगिक शिक्षा है, तो वहां पर आप राजनीति की बात करेंगे क्यों? मुझे लगता है कि अन्य विश्वविद्यालयों में हम्म, भी आप जादवपुर विश्वविद्यालय में जाइए या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जाइए, जो स्टेम के क्षेत्र है वहां पर राजनीति नहीं होती है। राजनीति आपके ओके, ह्यूमैनिटीज वाले क्षेत्रों में होती है, हम्म, जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री वगैरह, जहाँ पर विचारधारा, राजनीति इसका महत्व है। तो हम्म, मुझे लगता है जो टेक्नोक्रेटिक माइंडसेट है वो तो कॉम्पिटेंस का माइंडसेट होता है कि भाई जो मेरा काम करवा दे हम उसके करवाएं। पर हम्म, राजनीतिक जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है। हम्म, तो अब बात यह है कि आप ह्यूमैनिटीज वाले क्षेत्रों में पॉलिटिक्स को रोकेंगे कैसे? हम्म, क्योंकि बात चर्चा ही थ्योरीज पर है, पॉलिटिकल थ्योरी या स्टेट क्राफ्ट थ्योरी। तो वहां पर तो आपको लोगों की मानसिकता किसी ना किसी के पक्ष में होगी। आप ये हम्म, कर सकते हैं कि फेस्ट वेस्ट ऑर्गेनाइज करना है तो क्या उसके लिए जो चुनाव होता है, चुनाव कराकर चुनते हैं ना स्टूडेंट बॉडीज में, उसके जगह कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करे कौन स्टूडेंट रहेगा नहीं रहेगा। उसका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया हो, कितना मार्क्स आया है, या which is uncannily या similar जैसे स्कूलों में होता है चीजें. That is exactly how हाँ things happen in school. Just that the हम्म, scale is much larger and you are given much more autonomy in terms of planning things rather than planning the agenda. वो नहीं हम्म, होता, वो हम डिसाइड कर हाँ देंगे जैसे यही करना है. अब आप आप, कितने अच्छे से कर सकते हो करो. हाँ तो शिक्षक लोग आए, एडमिनिस्ट्रेशन आए, वो लोग चुने कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या क्षेत्र संभालना चाहिए। स्टूडेंट हम्म. कितना इंटरेस्ट लेकर टीचर के पास गया, प्रोफेसर के पास गया, बोला कि मुझे ये However, करना है, हम्म, मुझे वो you क्षमता know, देखना है, जैसे कॉरपोरेट में काम होता है, आप वो कर हम्म, सकते हो। जब चुनाव उनाव करने लग जाते हैं तो वहां पर फिर समस्या आ जाती है कि वहां पर राजनीति होनी ही है। हम्म. जब छात्र अपने बीच में किसी को चुनेंगे अपने नेता के रूप में, छात्र संघ के नेता के रूप में, तो वो एक समस्या का कारण बनता है। and just to add to it, whatever native Bahiragata I guess pointed out कि sociology department में कॉमी है तो भाई वो उनका काम है, right? For 5 years they are supposed to be doing that only, and the mainstream academia is left wing. So वहाँ पे तो आप कुछ कर नहीं सकते. But the other thing being कि segregation भी काफी अच्छा इसलिए है क्योंकि let's say the BTech student stays somewhere in a hostel और PhD scholars का hostel अलग है, तो that strata segregation is there. उसके बाद ये भी है कि there is definitely some other kind of segregation that actually happens in IIT, जो कि I don't know if I should put it in this way, but that is regarding inferiority complex कि जो बंदे reservation से आते हैं, and this is a legit issue, they often are being blamed by a certain section कि तुम तो reservation से आए हो, or sometimes they go into the spiral of, I mean, let's say self criticism कि हम तो उनसे inferior है, and they eventually I mean stay not participating in several things. So that is one issue that is prevalent over there, but वो भी are on lines of merit, not on lines of political worldview. वो आपको जो करना Hmm. है आप करें, बट द इंसेंटिवाइज सिस्टम इज सच कि अगर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करेंगे यू विल नॉट बी लुक अपॉन विद गुड आइज, बिकॉज इतने सारे अलग अलग जगह से लोग आए हैं, एंड Okay. रेयरली समवन इज एक्चुअली हु इज इन द नो हाउ ऑफ Hmm. थिंग्स लोकल. तो वहाँ पे आपके जो परसेप्शन है विच विल Hmm. बी, इट हैज टू बी स्टार्कली डिफरेंट, एंड यहाँ पे इतना ही फैला हुआ चीज होगा कि आप वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते. एंड इवन इफ यू गो थ्रू Hmm. द कैंपसेस दे आर बीइंग स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड, आप कुछ भी पॉलिटिकल एब्सोल्युटली कहीं पे भी चिपका विपका भी नहीं सकते. Even I anything see. which has slight connotational connotations, you will face the ire of the administration, जहाँ पे आपको शो कॉज दिया जाएगा कि आपने ऐसा किया तो क्या किया. And then you have Hmm. stuff like beautiful campuses and stuff. आपको मतलब the Hmm. माहौल और is such ना कि आपको मन नहीं करेगा ये सब करने का naturally. और देखिए आईआईटी में ना लोग एक उद्देश्य से जाते हैं, मुझे लगता है वो भी Hmm. है कि भाई जॉइंट में उन्होंने तैयारी की, जिस But परीक्षा I को do believe कम the से कम main 10 लाख problem is the लोग fund देते हैं। crunch. क्योंकि वहाँ पे there is no dearth of funds, things get done in a very non-confrontative way overall. ओके, यहाँ पे यही तो है कि जो भी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विल बी एट दी हेल्म ऑफ थिंग्स, वो सब चीज़ें कंट्रोल करेंगी, इवन ह्यूमन रिसोर्सेज और एलोकेशन वगैरह. तो देयर पे इट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि सत्ता मेरे हाथ में है, मैं अपनी चलाऊंगा. हाँ, जो देखिए बीटेक स्टूडेंट. मुझे ऐसा हाँ लगता एग्जैक्टली, व्हिच इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग इन द इंजीनियरिंग साइड ऑफ थिंग्स. एक्चुअली इन जादवपुर पीपल रियली डोंट केयर अबाउट these things. In fact, this is a recurring point कि there have been two Jadavpur campuses now. So one is in Jadavpur, another is in Salt Lake. Their point is ऐसे सेग्रीगेट ना करके आर्ट्स वाले जो भी बंदे हैं उनको एक जगह पे डाल लेते,
बाकी सबको एक कैंपस में रख देते तो बवाल होता ही नहीं, which is very true. Because they have all their lives जैसे to actually spearhead that revolution of whatever they think it is, and other people just keep on going in and out like that. जैसे देखिए, ये भी है ना कि आईआईटी में लोग बहुत परिश्रम करके जाते हैं। 10 लाख बच्चे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसमें से 10,000 चुने जाते हैं आईआईटी में जाने के लिए। भाई वहां पर ये फालतू की राजनीति के चक्कर में फंस गए तो भाई अपना भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और ऊपर से माता पिता का दबाव भी रहता है हाँ कि नहीं भाई पढ़ लिख के निकलो, कोई अच्छी नौकरी ढूंढो और अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो जो जो आपके जो स्टेम के क्षेत्र में जाते हैं ना, वो पहले से ही बड़े सीरियस होते हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले, एकदम फोकस्ड। वो उस मानसिकता के लोग ही होते हैं जो स्टेम के क्षेत्र में जाते हैं। स्टेम के क्षेत्र में कोई ऐसा वैसा नहीं जाता जिसको बड़ा मनचलापन करना है, हुड़दंग करना है। या स्टेम के क्षेत्र में ऐसे लोगों को बहुत कम देखेंगे, या ऐसे Which लोगों is की संख्या कम होती है। which is also why आप लोग देखेंगे that you will see कि जो भी actually are in the senior positions of all these SFI वगैरह जैसे organizations, even ABVP, there will be some research scholar who will be there for 5 years. तो उनके पास वो वक्त है to invest that amount of Yeah. output. Everyone who is in BTech or who is in a rush for placements and stuff और बाकी जगह उनको जाना है, they are in no serious administrative positions in these student bodies as well. बहुत rarest of a rare case में अगर they have I mean, really Yeah, merit and and proper होता है. वो ऑक्सफोर्ड में एक घटना हुई थी Indian रश्मि yeah, go ahead. सावंत। ऑक्सफोर्ड में ये हाँ घटना हुई थी रश्मि सावंत जी के साथ। वो स्टेम में थी और वो स्टूडेंट बॉडी की प्रेसिडेंट बन गई थी। और हाँ उन वहां के शिक्षकों को पता चल गया था जो घोर वामपंथी है कि अरे इनके माता पिता ने कोई जय श्री राम का चित्र बंगाली लगा एक के रखा बंगाली है। मेल प्रोफेसर था हाँ जिसने उसको वो, डॉक्स कर दिया। हाँ तो उनके माता पिता ने फेसबुक में जय श्री राम का चित्र लगाया, तो उसके उसके आधार पर रश्मि सावंत जी को निकाला गया था स्टूडेंट बॉडी से, यस और बहुत उनको पीड़ित किया गया। यस तो पहली स्टेम की थी शायद ऑक्सफोर्ड में जिन्होंने हाँ वो हाँ पद प्राप्त किया था। तो स्टेम के लोग ऐसे भी इन चक्करों में नहीं पड़ते, उनको उतना लेना देना नहीं है। वैसे भी साइंस की पढ़ाई इतनी भारी भरकम होती है, इतना कुछ पढ़ना, इतना कुछ सीखना है, पूरा दिन दिन बैठ करके पढ़ो तब समझ में आता है। तो उसमें ये सब राजनीतिबाजी में क्या। देखिए ये भी है, आई एम नॉट सेइंग कि स्टेम में बहुत चीजें एडवांस्ड है बाकी जगह नहीं है, दैट इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग कि जो आर्ट्स वाले बंदे हैं ना उनका करियर ट्रैजेक्टरी इज काइंड ऑफ सेट। यहाँ पे स्टेम के मामले में मामला थोड़ा अनसर्टेन हो जाता है क्योंकि जैसे जैसे समय भी जा रहा है चीजें इतनी अनसर्टेन है कि आपको वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा कंपेयर टू दैट इफ यू आर इन समथिंग लाइक आर्ट्स। या यही है कि आप एक ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद एक किसी प्रकार का पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे एंड यू विल गेट इनटू अ पीएचडी व्हिच विल टेक टाइम। तो इतना अनसर्टेनिटी भी नहीं है तो वो लोग ज्यादा मतलब इतने बॉर्डर्ड भी नहीं है, दे नो दे विल फिगर आउट थिंग्स। मुझे मार्केट में, जबकि ह्यूमैनिटीज के गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में ज्यादा जाते हैं। यस यस ठीक है, तो ओपन मार्केट में आपको जाने के लिए आप में क्षमता अधिक होनी ही चाहिए। आपको अलग अलग बातें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, ये ढूंढना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे हाँ प्लेसमेंट लगी है, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछ रहे। वो मुझे लगता है ह्यूमैनिटीज वालों का उतना हेडेक नहीं रहता, तो उनको now उल्टा सीधा। now I'll come into this debate of STEM versus arts, and I actually think the issue is the reason that it seems that it's usually the arts guys doing all the politics is because it's only because it's easier to get into arts, not because of the arts curriculum, because the people who are in arts and are doing politics all day are not it's usually more often than not they are not the most studious ones. They are the ones who do want to chill, and the guys who want to chill in STEM probably won't be able to at all, because in the end it's probably mainly mathematical. You can't good English your way through a graduation and masters. But in arts that is possible, that much is possible, because all my friends in JU Presi, from their graduation days to now their PhD, these people have never had a moment to breathe outside their studies. Most of my friends, some of them are MPs in some parties, but even my PhD friends today, people who when they were doing their masters, I would ask them
like in soft voices, hey, will you please read this book I am recommending? They would be like, no, we do not have time to read any book, not a chapter outside our syllabus. And even in our syllabus, we are not reading any books. We are just reading journal article after journal article for days and months. And for complex topics in sociology and philosophy, which you will be tearing your hair up reading and understanding them, grasping them, then writing something on your own based on what you learned from that stuff. That stuff cannot happen if you are trying to free people in Palestine sitting in your party office in JU. That is done by people who want to fool their way into success, and they know that their good English and good Bengali can help them. That stuff won't happen in STEM. That's why STEM bros can't do it. Now, on a more positive note, there is one similarity between IITs and normal Indian government colleges. I don't know if it's the case anymore, but in terms of their fests, and when somebody wins a particular competition in their fests, a lot of IITs as well as a lot of government colleges, as well as a lot of normal private colleges as well, simply renege on that promise. They do not, in the end, give that prize money. This has happened loads of times to many of my friends' bands, to my band as well. MSIT still owes us 4,000 rupees that we won in a competition about 10 years back. IIT Kharagpur, I have heard, although that was not IIT Kharagpur's fault, but one of my all-time favorite metal bands, Monuments, came to IIT Kharagpur in 2013, and I know that Monuments still actually deserve. IIT Kharagpur people or the organizers owe money to Monuments even to this date. So in terms of stealing money, or at least of the competitors in different competitions, in that topic, many colleges are same. But does that happen in IITs anymore? Do you all know? No, because for example, क्या होता है ना, जहाँ पे आपको sufficient पैसे दिए जाते हैं beyond management कि अब अपना भी देख लो, वहाँ पे इतना नहीं होता. In fact, the conference I had gone for, the volunteers were given all sorts of. It was exactly the same. जो guests खाएंगे वही आप भी खाएंगे, आपका देखभाल किया जाएगा. अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, you tell your senior professor, क्योंकि there is someone as a supervisor, वो आपके problems को address कर देगा. In terms of places जहाँ पे ये होता है कि only there is a student body, उसके ऊपर कोई नहीं है, वहाँ पे ये दिक्कत ज़्यादा होती है कि उनको लग रहा है कि हम इतना कर रहे हैं, so there is this sense of entitlement, हमारा भी तो थोड़ा बनता है कि हम अपना भी पेट पाल ले और ध्यान रख लें. तो वहाँ पे ये ज़्यादा होता कि नहीं मिलता. And in tech fests and stuff we faced it pretty commonly that जहाँ पे जिस दिन कंपटीशन हो रहा है उस दिन आप एक बार ट्रैवल करके जाएंगे, उस दिन वो रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, वो कहते हैं बाद में हम डिक्लेयर करेंगे. तो कौन वापस दूसरे दिन लौट के जाएगा? कोई नहीं जाएगा, nobody does. तो फिर वो नहीं होता. मुझे तो साला मेरा कॉशन मनी भी नहीं मिला, 10,000 या कितना होगा शायद, and I don't think I'll ever get it. So फेस्ट का तो छोड़ ही दो. Yeah, we have due monies from many branches of Heritage, because Heritage has separate fests for all of their departments. So is it such a grand college? मैं जब गया मैं ही चौंक गया, बाबा इतना बड़ा कैंपस बनाया किस लिए है तुमने? कौन पढ़ाएगा? Heritage. Our vocalist was from Heritage, and Heritage owes us money. Our bassist was from MSIT, and MSIT owes us money. MSIT, by the way, has one of the best tech fests in Kolkata. I see. It's really good. And then many of our friends, our seniors, they won gigantic competitions in IIT Kanpur. Their money is still due. I don't know if IIT Kanpur does this anymore or not, but in the 2009, 10, 11, 12, 13, many people stole a lot of money even in IITs. I'm sure they are great IAS officers now. Anyway, we are past the 3 hour mark now. So, and Rishabh, we are not अगली up today. अगली बार देखिए, अभी स्टेम और आर्ट्स पे बात हुई, ये कॉमर्स वाले पीछे छूट गए. तो कॉमर्स वाले और जो MBA BBA कर रहे हैं उन पर भी बात करना है, उनके कॉलेज में क्या चलता है. क्योंकि मुझे लगता है भवानीपुर में ज्यादातर वही लोग जाते हैं, भवानीपुर और साउथ सिटी और सेंट जेवियर्स वगैरह में. कॉमर्स डिस्कस करने के लिए हम तुम्हारे जात वालों को ही लाएंगे. तुम और ऋषभ बैठ के ये डिस्कस करना. ये बंगालियों का काम नहीं है. ये श्रवण ब्राह्मण है, मैं बीबी के एडजेसेंट हूँ. हम सिर्फ आर्ट्स और स्टेम पे ही बात करेंगे भाई. नहीं, मैं भी स्टेम से ही हूँ. अग्रवाल तो हो, आसपास के परिवार वाले. हाँ, वो एक लेटेंट नॉलेज रहता है कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर, सिलेबस को लेकर अग्रवाल में. आई बिलीव इट्स माय पर्सनल, ये मेरा टीम फॉइल हैट है. नहीं, सीए में लोग कैसे परेशान होते हैं, माथा कैसे खराब हो जाता है, बाल कैसे नोचने लगते हैं जब सीए की पढ़ाई करते हैं, उसका नॉलेज मुझे है. क्योंकि मेरे घर में
ऐसे लोग हैं जो सीए है, तो या तो और मेरा मैं भी एक जानता हूँ फ्रेंड भाई है बहुत सीए, प्रेशर होता है। उससे ही पता चला कि सीए में फेल करना इज नॉट इवन अ वेरी लुक डाउन अपॉन थिंग, इट्स सो टफ दैट यस, या फेल किया तो क्या है, नेक्स्ट बार ट्राई कर लेना। नहीं नहीं, उसका पासिंग रेट मैं बताता हूँ। ऑन एन हम्म एवरेज उसका पासिंग रेट होता है 5%। हम्म ठीक है, तो 3 प्रकार के एग्जाम होते हैं। एक होता है आपका एंट्रेंस हम्म एग्जाम, सीपीटी, कॉमन ओके प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद होता है आपका 1-2 साल बाद आईपीसीसी। ठीक है, ओके बीच वाला होता है। हम्म उसमें भी वही 5-7% पास रेट। फिर फाइनल, हम्म फाइनल और भी टफ होता है। तो ऐसे हम्म बहुत कम जन होते हैं, बहुत रेयर 2-3% जो एक शॉट में पूरा क्लियर कर लेते हैं, बिना एक बार हम्म भी कोई फेल किए या बैक आए। Yeah, I did not know बहुत that. कम लोग I होते had a fight with that friend. कि I was almost ridiculing that person. क्या fail कर गया, and that person got very pissed off with me and gave me this history of CA. हैं। सीए बहुत भयानक होता है भाई, बहुत प्रेशर होता है। दूसरा ये एक जो बोल रहा है कि वेब सीरीज आई है, बिना आप पढ़े देखना, भी आपको बिना पढ़े थोड़ा भी सा इंजीनियर्स आइडिया हो बनते हैं। जाएगा। भाई बिना पढ़े इंजीनियर्स बनते हैं, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती। तो वो तो मत कहो, लोग सच में बहुत परेशान। हाँ, इनफैक्ट यू नो इन जादवपुर most of the जादवपुर most of the I mean placement and stuff is looked upon by the student placement sir. Actually जो एडमिनिस्ट्रेशन है उतना सर नहीं खपाती compared to IITs जहाँ पे they अच्छा really look upon all that things. So okay exactly the entire placement tree or the branch is being sustained by the students with the help of their alumni connections, जो जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं उनके HR वगैरह के कॉन्टैक्ट्स देते हैं। वो जिस दिन स्टूडेंट लोग फेड अप होके बंद कर देंगे, the entire thing will go crashing down. It's so bad. हम्म हम्म जैसे मैं आपको आपको एक एक लास्ट बात सीरीज एक लास्ट रेकमेंड बात एक लास्ट करूंगा। बात जस्ट 1 मिनट, एक लास्ट बात, ये भी एक कारण है कि यू सी इन IITs आप ना अटेम्प्ट्स ले सकते हो। NITs की अगर देखो, जेई में आप काफी बार दे सकते हो। वेस्ट बंगाल में वेब जी आप आई गेस ओनली 2 बार दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। तो लोग इतना नहीं झेलते वेब okay जादवपुर में लैंड अप करने के लिए जितना अदर प्लेसेस के लिए झेलते हैं। आई गेस जेई एडवांस भी आप 2 बार ही दे सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते, या फिर देयर इज एन एज लिमिट। जेई मेन आप काफी बार दे सकते हो, एंड मेडिकल तो मतलब छोड़ ही दो, उनका डिस्कशन लेके बैठ जाएंगे। तो इसलिए मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे सिर्फ लोग रैंडमली मर जाते हैं, देन इट्स एन इशू, अदरवाइज कोई पॉलिटिक्स नहीं। मैं सीए के बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। तो एक सीरीज आई है, वेब सीरीज, थोड़ा बहुत आपको उसका आइडिया मिल जाएगा कि सीए का प्रेशर कैसा था। एक हाफ सीए करके होता है। तो अच्छा हाफ सीए में ये हाफ क्या लगाया है, एक व्यक्ति जो 8 साल से सीए का फाइनल दे रहा है पर उसका क्लियर नहीं हो रहा है, पर ऑफिस में वो हम्म काम कर रहा है। तो सीए में अच्छा ऐसा भी नहीं होता है कि जब तक आपके हाथ में डिग्री ना हो तब तक आप जॉब नहीं कर सकते, नहीं, जॉब लॉयर दे जैसा देते। है राइट हाँ, आप जॉब करो, आपको बीच बीच में छुट्टी मिलती रहेगी, आप देते जाओ टेस्ट, ओके जो भी अपना ओके ओके क्लियर जब होगा हो जाएगा। तो नाइस सीए ऐसा होता है, और बहुत लोग 8-8 10-10 साल तक टेस्ट देते चले जाते हैं, उनका क्लियर नहीं होता, ऐसा है। हम्म हम्म और बस वही है कि एक सीए को एक फाइल पर साइन करने का अधिकार मिलता है, जबकि हम्म अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप फाइल साइन नहीं कर सकते, हाँ पूरा लॉ स्टूडेंट वैसा है। जूनियर्स के तरह काम करते हैं, वैसा ही है इसका मतलब सीए फील्ड। हाँ, पर वो अच्छा उसका एक्सपर्टीज बहुत अलग लेवल का है, मतलब लॉ में तो वो एलएलबी वाला डिग्री होता है ना, सीए होता है कि वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, वो कॉलेज का डिग्री नहीं है। सीए इज नॉट अ कॉलेज डिग्री काइंड ऑफ ए थिंग। सीए एक अलग आउटसाइड द कॉलेज कोर्स है जो आईसीएआई चलाता है, इंडियन सीए इंस्टीट्यूट। वो आप कॉलेज में नहीं पढ़ते, आपको इंडिपेंडेंटली पढ़ना पड़ता है, तो ज्यादातर लोग कोचिंग में जा करके पढ़ते हैं। उसका कोई कॉलेज नहीं होता सीए। एग्जैक्टली, ये कोई कोर्स नहीं, बहुत मतलब हटके स्टेट कॉन्सेप्ट है उसका। करिकुलम में नहीं होता, यू हैव टू गो आउटसाइड, मतलब इंडिपेंडेंटली परस्यू करे, फिर यू अपीयर फॉर द थिंग एंड यू बिकम वन। और 4-5 साल का कोर्स होता है, और इतने मोटे मोटे बुक होते हैं, मतलब पोथी पोथी का बुक आता था। मैं देखता था ना मेरे घर में, उफ, बाप रे बाप, मैं डर जाता था कि इतना पढ़ना पड़ेगा। हेलो। wait, my internet is not working, can you all hear me? Were you all able to हाँ hear हाँ away? Because I हाँ, could not hear, हाँ मैं it was आपको all अभी stuck. सुन पा रहा हूँ, मैं सुन वी पा कैन रहा हूँ। Hmm.
My internet is आपने probably gone right now. You all are all frozen. I don't think it's happening in the main feed. अच्छा दादा निकल गए. Actually, अच्छा. okay. Do you To think the last a question. degree matters anymore in most professions like the tools I'm using now? Didn't. VXT, to be honest, more than degree or skills matter. And this is not a cliche, this is the reality. At least the sector in which I work, IT sector, they focus more on skills. Degree is your credential, your entry point. Okay. So once it degree is about eligibility. Beyond that, it's your skill. That if you Hmm. want to get into a position, you need to have certain eligibility and credentials for which degree is required. Other than that, it's all about your skill. मेरे ख्याल से डिग्री ओनली मैटर्स इन टर्म्स ऑफ वो चीज़ों को थोड़ा डिलेड या अर्ली कर देती है. सो इट इज़ लाइक दिस कि अगर आप आईआईटी में पहुंच जाते हो, इट्स नॉट लाइक कि आपको फिर पढ़ना नहीं पड़ेगा, वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा. बट देन यू विल हैव ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स जहाँ पे द पूल ऑफ योर कंपटीशन वुड बी मच लेस. देयर बी पीपल यू आर फेमिलियर विद, और वहाँ से आपका शॉर्ट सिलेक्शन होना है. इन टर्म्स ऑफ दैट कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँचते, यू लैंड अप इन सम प्राइवेट कॉलेज, फिर आपको जाना पड़ेगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जहाँ पे इट्स अ ह्यूज पूल एंड यू डू नॉट हैव एन इनिशियल एडवांटेज एंड स्टफ. I think, तो वहाँ पे भी आप पहुँच सकते हो इवेंचुअली इफ यू हैव द स्किल्स, यू विल रीच देयर जस्ट 5-6 इयर्स लेटर. तो वही है कि 2 yeah, साल का मेहनत तो 11-12 में करते हैं लोग, उसी का फल आपको अर्ली मिलेगा. नहीं करते हो तो 5-6 साल घिस के फिर यू रीच वेयर यू हैव टू बात वही access की बात है. जैसे आईआईटी में यदि आप जाएंगे तो आपको जो पूल ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपके जो आसपास के क्लास के रीच. लोग होंगे, वो ज्यादा समझदार होंगे, तो आपका भी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है ना. सी फिर दैट इज आपके एग्जैक्टली द मेन. आपके कॉलेज का एक्सेस भी ज्यादा बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रीज के पॉश पास होता है. डिग्रीज वो पॉश वो जो डिग्रीज है दैट इवेंचुअली गेट यू द एक्सपोजर एंड कंपटीशन वो बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. स्टेम में तो आई फील एटलीस्ट ये तो है कि क्योंकि जैसे यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज कॉमन, ठीक है, यू आर प्रोड्यूसिंग स्टफ एट स्केल. आर्ट्स में क्या है कि आप एक पीएचडी कर रहे हो, तो थीसिस का जो टॉपिक है वो आपका ही है, उसमें 10 लोग काम नहीं कर रहे होंगे. तो आपके दिमाग से जो भी विचार उत्पन्न होंगे आपको उस पर काम करना है. कंपेयर टू दैट अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और फॉर से एन एआई साइंटिस्ट में इट इज स्केलेबल थिंग. तो आपका कंपटीशन होगा, 10 लोग सेम ही चीज कर रहे होंगे, उसमें यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द अदर पर्सन कि आप कितना अच्छा हो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स. सो वहाँ पे अगर आपको कंपटीशन हेल्दी नहीं मिलेगा जहाँ पे आप कंपेयर कर सको कि ये बंदा यहाँ पे है, मैं इससे कितना आगे हूँ, यू कैन नॉट सिंपली सस्टेन योरसेल्फ. एक तो तो वो कंपटीशन है, एक कंपटीशन है, दूसरा एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज है. जैसे माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनी आईआईटी और ये बिट्स पिलानी वाली जगह में आएगी. वो कोई दूसरे प्रकार के प्राइवेट कॉलेज में नहीं आएगी. बिट्स पिलानी भी वैसे प्राइवेट है, पर वो बहुत ही एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन है. वो आईआईटी के बाद सबसे ऊंचे स्तर की इंस्टीट्यूशन मानी जाती है इंजीनियरिंग और स्टेम में. तो वही बात है कि आपका एक्सेस अच्छे अच्छे लोगों के साथ, जो बड़े बड़े कंपनीज है उनके साथ बन जाता है. बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवा देंगे अपना प्रयोग वगैरह करने के लिए, अच्छे तो जगह विच इज इंटर्नशिप में लगवा देंगे, वो सब है. ये जो सवाल पूछा ना, दैट इज एक्चुअली बिकॉज इफ यू सी इट्स शॉकिंगली बैड कि द इंजीनियरिंग करिकुलम हैज एक्चुअली गॉट नथिंग इन कॉमन विद जो इंडस्ट्री में करना होता है. अभी हालत ऐसे हाँ, है, ये तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एब्सोल्युटली मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट, एक्सेप्ट फॉर इफ यू आर बहुत प्रिपेयरिंग टू गेट और Shak, समथिंग वेरी ऑन बहुत दे आर वेरी बैकवर्ड. मतलब our this curriculum is particular extremely problem outdated. this particular problem cannot actually be even solved because of what we consider to be an education system. In an education system, someone will be an expert on it, write a book. That book will have to sell for years because it's part of a syllabus, and if you take all that out, only then you can solve it. So actually you can't solve this problem unless you go the Sanjeev Sanyal route I of think- having no brick and mortar campuses. Yeah, which is Sanjeev what Sanyal model. मैंने Another would be कि let these companies, industries set up education institutions and they and decide the curriculum. जो to उनको to to आवश्यकता है वो पढ़ाएंगे बच्चों को. to conclude ये to अलग से conclude एजुकेशन सिस्टम जो गवर्नमेंट कंट्रोल में, वो नहीं. या लास्ट तक मैं गवर्नमेंट इतना ने ही कहना जिसने चाहूंगा करिकुलम डिसाइड किया, कि लेट द मार्केट every डिसाइड. time वो एक तरह से. every time I have thought of this problem on a macro level ना, and I have actually traced back to a time मुझे यही लगा कि दिक्कत प्राइमरी एजुकेशन में है.
प्राइमरी एजुकेशन में आप जितनी जल्दी वाई को इंट्रोड्यूस कर देंगे उतनी जल्दी पीपल कैन एक्चुअली डिसाइड कि जीवन में करना क्या है, एंड देन ऑन यू कैन एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट द प्रेशर मच मोर इक्वली बिटवीन द सेवरल ईयर्स कंपेयर टू अब 10 तक आप लोगों को व्हाट पढ़ाया जा रहा है, लोगों को समझाया रहा है कि ये भी है वो भी है। अब 11th में जाके आप विचार करो कि आपको क्या करना है, तो उसके बाद द प्रेशर, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दैट यू हैव टू कॉन्कर इज एक्सपोनेंशियली हायर, क्योंकि क्लास 9th और 10th में देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसको पढ़ाने की मुझे ऐसा लगता है कोई आवश्यकता ही नहीं है। उससे काफी पहले आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सब तो नहीं करना, एंड यू टीच अदर इंपॉर्टेंट स्टफ जो कि आपके आगे के रास्ते को आसान कर देंगे। दे डोंट डू इट नहीं। जिसको आप कंठस्थ करना बोलते हैं, पहली दूसरी कक्षा तक, जहाँ आप मेमोरी को शार्पन कर दे, क्योंकि मेमोरी शार्प होने से भी बहुत एडवांटेजेस होते हैं। आप क्विक थिंकिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जैसे ही आप थोड़ा सा 4th 5th स्टैंडर्ड में जाए, थोड़ा थोड़ा आप एप्लीकेशन और वो सब शुरू कर दे। हमारा क्या है ना कि कंठस्थीकरण 10वीं 11वीं 12वीं तक चलता रहता है। दिक्कत वहां है। हाँ एक जगह तक रोक कर फिर आप एनालिटिकल स्किल्स पर ध्यान दीजिए तो ठीक रहता है, पर आप लगातार कंठस्थीकरण, बहुत सारे तो Yes. कॉलेजेस में भी कंठस्थीकरण चल रहा है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कि कंठस्थ करो लिख दो बस। तो ऐसे हाँ कहाँ से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएगा, हाँ आपका एनालिटिकल स्किल्स कहाँ से आएगा? हम लोग जैसे लोग तो एनालिटिकल स्किल्स सीखे ऑफिस में, ट्रेनिंग में। एग्जैक्टली, कॉलेज के इतना बाद ही सीखते हैं ये प्रॉब्लम सब। होता है, इतना प्रॉब्लम होता है कि कस्टमर से कैसे निपटे। वो अचानक से एकदम इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन पूछ लिया क्लाइंट, तो उसको मैं क्या सोल्यूशन दूं? क्योंकि रट के तो नहीं जा सकते ना वो सोल्यूशन, यू हैव टू बी यस डायनामिक, ऑफ योर फीट। तो या आप एजुकेशन में जितना डायनामिज्म लाएंगे ना, कि अलग अलग सिचुएशन में कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना, तो मैं तो बोलता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी सिस्टम हटा करके जो कंपनीज है उनको बोलो कि आपको जो पढ़ाना पढ़ाइए, जो विच इज ट्रेनिंग वाई लेना दीजिए। आप 4 साल पढ़ाइए, जितना साल भी पढ़ाइए, जो भी इंडस्ट्री के हिसाब से। जैसे आजकल तो सर्टिफिकेशन का कितना वैल्यू है, जैसे यदि मैं आईटी नहीं, सेक्टर में ही बोलूँ तो अज्योर सर्टिफिकेशन, गूगल सर्टिफिकेशन, इनका वैल्यू डिग्री से कहीं ज्यादा है। ये जो इसीलिए दिस वेरी आइडिया ऑफ अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स एंड आई मीन एनालिसिस, इसीलिए द मोस्ट फेमस जेई फिजिक्स बुक in the engineering domain is concepts of physics by H.C. Verma. It was exclusively called concepts of physics. उसके ऊपर भी now people want 5 volume books जिसमें type wise इसको segregate अच्छा करके problems को कि आप copy paste करना चाहते हैं. I mean what the hell? इसे इसे ना, इसका एक इक्विवेलेंस मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में भी है, इसको कैराटिफिकेशन बोलते हैं। क्योंकि अभी बहुत से जुजित्सु जिम्स में भी ऐसा हो रहा है कि कैराटे में क्या है कि यू गो इन एंड यू नो इन 1 or 2 years यू विल बी ब्लैक बेल्ट, कुछ भी कर लो, वो फिक्स्ड रट्टा मार के ही वो सब मूव करना है, हैया हैया करना है। तुम किसी के सामने खड़े होके हैया हैया करोगे, 2-3 लकड़ियां फोड़ोगे, तुम्हारे सामने कोई मार खा के उलट जाने का एक्टिंग करेगा और तुमको एक ना एक दिन ब्लैक बेल्ट मिल जाएगा। वो 12 साल के बच्चे के पास भी कैराटे में ब्लैक बेल्ट हो सकता है। अब कैराटे में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई जिम में ऐसा सिचुएशन नहीं है, कहीं पे अगर बोला जाता है कि नहीं तुम 10 साल बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के सामने बैठ के मेडिटेट करो और सिर्फ कैराटे प्रैक्टिस करो तभी तुमको ब्लैक बेल्ट मिलेगा, तो कोई जाएगा नहीं उस जिम में। तो अभी कुछ जुजित्सु जिम्स में ये एटलीस्ट इन यूएसए, इन एटलीस्ट साउथ कैलिफोर्निया व्हिच इज द कैपिटल ऑफ jiu-jitsu, see it's called Brazilian jiu-jitsu, the capital of Brazilian jiu-jitsu is SoCal, South California, because capitalism, because jiu-jitsu was not working in Brazil, it was not being popular, okay। तो वहां पे ऐसे कुछ ब्राजीलियन जुजित्सु जिम्स अब शुरू हुए हैं कि आप आओ, ब्लैक बेल्ट इज गारंटीड। अब इस वजह से वहां पे ज्यादा कस्टमर्स जा रहे हैं, गांडुआ। मतलब they could have learned that stupid shit in karate anyway, they are going to a Brazilian jiu-jitsu gym but they want the guarantee of a black belt। नहीं तो जाएंगे नहीं वहां पे, नहीं तो माँ बाप अपने बच्चे को भेज नहीं रहे हैं वहां पे। क्या आइडिया सी है भाई। वही है ना, जब या उपाधि ज्ञान से बढ़कर हो जाए ना, हाँ हाँ वहां पे समस्या आ जाती। यस ज्ञान सर्वोपरि है, यस उपाधि तो बस एक ये है कि आपने ये ज्ञान अर्जित किया है तो आपके लिए इसीलिए आपको ये पदवी दे दी गई है। पर हाँ आपके लिए यदि ज्ञान से ऊपर पदवी हो जाए तो फिर वो पदवी व्यर्थ है, वो पदवी हाँ। का कोई हमारा अर्थ एक नहीं है भक्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, और ये है उपाधि मार्ग। है। उपाधि मतलब Okay, thanks Abhay, thanks Troyan, thanks Shayanton if you're still watching. Thanks a lot everyone in the live chat as well, VXT, Anand, Arpit.
VXT, let me know if you agreed with my observations on the music of Dhurandhar as well in the beginning of the live stream. If you did watch it, thanks a lot, guys. We are then tomorrow doing that infra live stream, okay? With everyone, with all the infra obsessed guys. साउथ के लोगों को बुलाइए, उनका थोड़ा हाँ दिमाग इस क्षेत्र में बहुत उन चल लोगों रहा का बहुत तड़प है इस बात को लेकर। उन लोगों को इतना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ना, कर्नाटका तमिलनाडु जैसे बैकवर्ड स्टेट्स में बैठ के, तो उनका दुख का बात थोड़ा हम सुनेंगे कल, ठीक है? बाय बाय फिर गाइस। हमने बात की कि मतलब क्या अपना क्या बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड का प्रॉब्लम लेकर आ गए। हाँ हमारे वही टाइटल होगा कल हम फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हाँ शशि अराउंड 7:30 और 8। या गुड नाइट अभय, गुड नाइट स्टॉन, गुड नाइट गाइस, बाय बाय। বসন্ত এলো পাতা ঝরা বয়স পাড়ার সময় কিভাবে কে জানে এত রঙের সাথে হলো পরিচয় হৃদয়ে কিছু দিয়ে যাচ্ছে যে অকারণে আমি কার কি আমার ভুলে যাচ্ছি দিন রাতের হিসেব বসন্ত এলো কোন সুরে গান আমি গাইব এখন দাও বলে দাও দাও বলে দাও আমায় ঘিরে উদাস হাওয়া বয় নাও খুঁজে নাও আমায় খুঁজে নাও বসন্ত এলে শুধু